Hold on, just give me a moment. Time for a little nap. ये क्या भाई बताओ It's just a dream. just hold on एक मिनट मिल गया Smells so good. Okay, let's get started. Good morning, everyone. और वो बंदी करा मैंने सुबह ही मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया मैं बेसिकली और सुबह ही मैंने पुल कर लिया तो रिजल्ट ये रहा कार्टिथिया मिली तो सही लेकिन it cost me like she cost me like 130 pulls 50 लूज हुआ मेरा एक्चुअली एंड मुझे ये गधे का पिल्ला मिला ये गधे का पिल्ला अभी सीक्वेंस 1 पे चल रहा है बड़ी हो गया मेरे पास टोटल 15,000 एस्ट्रॉइड्स है लाइक 15,000 एस्ट्रॉइड्स and after losing her on 50-50 I got her like in 40 bulls so इतना कुछ खास नहीं रहा एक्सपीरियंस और इतना कुछ महंगा भी नहीं था ज़्यादा लाइक ये 160 बुल्स तो नहीं लगे कम से कम so she is finally here but अभी सीन ये है कि I don't have much assets left एंड मुझे उसका वेपन निकालना है एंड वेपन पे है लाइक 22 पीटी चल रही है मेरी वेपन बैनर पे एंड मेरे पास ये जो आफ्टर ग्लो कोरल है वो मेरे पास 408 पड़े हुआ है तो अगर मैं चाहूँ तो 408 कोरल मतलब 51 पुल्स मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ राइट बट फिर सवाल ये उठता है कि मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि इसका सीक्वेंसेस कैसा रहेगा सीक्वेंस 1 सही रहेगा या फिर उसका वेपन सही रहेगा तो मैं उस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ Get zeal that lasts for like 10 seconds when Cartethyia or Fleurdelys attacks Cartethyia. ठीक है मतलब स्प्रेड करता है बेसिकली
ओके, ये क्या है? इरोजन चाहिए टारगेट है 120 पॉइंट्स, ठीक है। ओके, इससे मुझे 25% क्रिट डैमेज मिलेगा 15 सेकेंड के लिए, नॉट बैड। ओके, उसका जब हम बर्स्ट यूज़ करेंगे, लिबरेशन, जो पूरा 3 शॉट अटैक है पूरा इकट्ठा करके मारते हैं, उसके बाद वो क्रिट डैमेज निकल जाएगा। सो तब तक हम उसको क्रिट डैमेज यूज़ कर देंगे, लास्ट अटैक जो कि उसके बाद हमें वैसे भी स्विच करना रहता है कैरेक्टर, सो इट इज़ लाइक परफेक्टली फाइन। सीक्वेंस 2, ये थोड़ा सा कैसा आएगा, मैं निकाल तो सीक्वेंस 2 एक ही सकता हूँ ना, दूसरे का पता नहीं, दूसरा देखना भी मतलब। सोवर कैरेक्टर बढ़िया है, और मेरे पास पुल इसलिए कम था क्योंकि मैंने शिकोना निकाली है। A grand overture. पिछले पैच में मैंने शिकोना निकाल के रखी हुई है, इसकी वजह से मेरे पास पुल्स नहीं थे इतने ज़्यादा। अगर मैंने शिकोना नहीं निकाली, एक्चुअली शिकोना पे भी मेरा 50-50 लूज हुआ था, और वो जो टाइगर का बच्चा था ना, ये कौन The नंबर है? divinity may foresee the future of the world, but I doubt they can predict which. अरे आऊ का बच्चा मुझे मिला था 50-50 लूज होने पे, किस पे? शिकोना पे। तो सेम चीज़ एक्चुअली हुआ, शिकोना पे भी मैं 50-50 लूज हुआ, और मुझे ये पहला बत्तख का बच्चा मिला, लिनियम लिंगियन, सॉरी, सो थोड़ी सी निराशा हुई थी क्योंकि मेरे पास पुल ज़्यादा नहीं था। आई हैड लाइक 21,000 के आसपास मेरे पास से राइट्स, जो कि मैंने इकट्ठा फार्म कर करके रखे हुए थे। तो सीन उसके बाद ये हुआ कि मैं सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, एक 20-30 पुल करके देख लेता हूँ, एंड लकीली 25 या 27 के आसपास मुझे ये मिली थी शिकोना। तो उसके बाद मेरे पास अराउंड 15 से 16 हज़ार के आसपास एस्ट्राइड बचे थे, 15,000 समथिंग। 610 पुल मुझे आज मिले, वो लॉग इन कर देंगे, और 600 एस्ट्राइड्स मिले। तो फिर मैंने ट्राई किया, और मैं 80 पीटी पे है, मतलब लिटरली 80 के आसपास कहीं मेरा बहुत हार्ड पीटी पे मिली है मुझे। आई मीन हार्ड पीटी पे लूज हुआ हूँ मैं। ये यहाँ पे निकला, ये नहीं। ओके, सो अराउंड यहाँ से काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 74 5 6 7, तो 78 के आसपास मुझे मिला। आई मीन 50-50 लूजा, ये बंदर का बच्चा मिला मुझे। उसके बाद 5 10 15 20 25 30 35 40 43 पे मुझे काटे थे मुझे। इट्स काइंड ऑफ लाइक ओके, 43 पे मुझे मिली वो। तो अब सीन वही है, उस पर मेरा पूरा ये वेस्ट हुआ। होल्ड ऑन, किसका कॉल आया? जस्ट कीप इन माइंड। हेलो, हाँ बोला। क्वेश्चन है? बस जानबूझ के तंग करते हैं लोग। सो बैक टू द टॉपिक। तो अब हमें बेसिकली अभी मेरा गोल ये है कि कुछ भी करके इसका वेपन निकाल लूँ मैं, है ना। वेपन पे पीटी बोल गया है, कितने भी पीटी चल रही, 15 20
22 की बीडी चल रही है एंड 80 का है गारंटेड है। तो हाँ तकरीबन 58 के आसपास अगर हार्ड पीटी पर भी अगर मुझे काउंट करना हो तो सीन ये है वेपन निकालना फार्म करना है। पर अभी क्वेश्चन ये है मेरा सर अभी यहाँ पर अटक के पड़ा है। ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका वेपन निकालूं आई मीन इसका वेपन निकालूं या फिर इसका वेव रैंप पे जाऊँ। यहाँ पर कंफ्यूजन है बिकॉज आई डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग इज हर सीक्वेंस वन। तो लेट्स सी। बाकी कैरेक्टर तो मुझे बहुत पसंद है देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। Where is this? You somewhere with that. I have no idea about this. ये क्या है? अच्छा इवेंट क्वेस्ट है वो। ओके ये इवेंट क्वेस्ट है एक्सप्लोरेशन साइड क्वेस्ट तो बहुत सारा पड़ा है वो तो मतलब मेरी स्टोरी लाइन ये चालू करेंगे हम। So let's enjoy the storyline. बकरी पंती तो देखो होगी। There are traces of a resonance energy discharge everywhere. Hold on. What a mess! This place looks like it was just bombarded. Yep, that's definitely Cartethia's residual frequencies. अच्छा ये हमें ऊपर लेके जाएगा। Not bad. सही है बेटे। किसे ढूंढ रहा अभी ये? No response. इसको ऑटो पे डालो। Can you tell where these traces lead, Abby? अभी का तो पता ही होगा तुम ढूंढो। Over there! But the traces are kind of messy. They feel unsteady, too. अच्छा That way. That's the archipelago across from Aguna. The traces are still fresh. We should follow them to find Cartethyia before they fade. जब तुझे दिख ही रहा है तो उसे पूछने का क्या मतलब बनता है? Yes. With the Thenodian's will gone, she wouldn't lose contact unless something's wrong. Really wrong. But before we go... अब क्या हुआ? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? Oh, a call from the honored laureate himself. What is it? Missing the serenity of my castle, I presume. Sadly. Cartethyia is missing. I see. It is indeed a rather urgent issue. We need to find her. Go on. What is it you wish to ask of me? पूछो। I want to learn more about the archipelago before I set off to find her. Ah, caution is indeed a virtue. Since you're in a hurry, I'll spare you the lengthy details. सही है। That archipelago is called Septimont. It's another city-state within Renacita. Like us Raganesi, its people were guided by the Sentinel across vast seas to settle there. But over time, Septimont and Raguna's differences led to a rift. Each one forged its own path. अच्छा What kind of differences? Septimontians don't believe in the Sentinel.
फिर तो वो दिक्कत है. Even from a shared origin, the hearts and minds of people can diverge in unexpected ways. Septimont is a city of warriors. Its creed is simple: all for glory, fear no death. They revere heroes, not the divinity. Under the Order's control, Raguna enforces strict border controls for Septimontians. But Septimont places no such barriers for the Raganesi. You could say that Septimont has a far more accepting attitude towards Outlanders. At present, Septimont is hosting the Great Aegon, a cornerstone in the city's economy. Such a season draws visitors from far and wide. Sounds like the perfect time to visit Septimont. Thank you, Cantarella. You're the Thessalia's eternal ally. And of course, my esteemed guest. No need for formalities between us. चलो, let's get started. Don't care, Wilson. कहाँ छुप के बैठी है पता नहीं. Look! A wingray right here! Here. It can give us a lift. The wind rises. बेटी उसको लेना तू. ए, इसके साथ उड़ो. My heart's racing like crazy. Do you feel sick? Not really. I just have this uneasy feeling. Uneasy? जाओ कहाँ Did था? you sense something dangerous in Septimont? I don't know how to put it. It's strange. Like things are all tangled up somehow. बताओ. उसको पकड़ते हुए हम नए रीजन में जा रहे हैं. ये पहुंचे हम नए रीजन में. स्किप तो ना कर रहा मैं. स्किप तो बिल्कुल भी ना कर रहा मैं. ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे स्किप बटन होने के बाद भी स्किप करने का मन नहीं कर रहा. Look at that. ये तो अटैक ना कर देंगे बीच में. Here we are. Abby, we've arrived. How do you feel now? वो बोल ही रहा था. क्या हुआ वो? Abby? सो गया वो लगता है. Nothing from my tacit mark. Is it sleeping? Or is it... Cartethyia helped with Abby's symptoms before. I could really use her help now. बताओ. सीधा वेपन निकाल दिया. We share the same thread of Imperator's power. I could try using that to sense where she is. बताओ. लौंडा होशियार है. What's that creature she's facing? A half-human, half-lion tacit discord? Or special echo? हो सकता है. She was here before. I'll follow the same path and see if I can find someone to talk to. Who's this?
कुछ तो गड़बड़ है। अभी अब चौथ को ना That armor might be an echo. An echo that awaits a true warrior. चलो भर गया उसे। इस पे थोड़ा पीछे कर कहाँ मर कहाँ रहा है। लेफ्ट साइड में ढकेल दौड़ा इसको। अच्छा ये इस शो मसाला इसकी वजह से गिर रहा बार बार। It seems happy. Is it because I'm reminding it of past battles? Looks like I've made my first friend here. देखो एक्सप्लोरिंग और ट्रैवलिंग वगैरह का सीन है तो ये नाम ही भूल गया मैं इसका। फिर भी बढ़िया है उस टाइम का। So, this is Septimont. तो नए रीजन में तो पहुंच गया। ये क्या है? What's this? कार्टेथिया के ट्रेसेस है वो, हवा में बहता हुआ। अभी उसको देखते देखते जाएंगे। बता दे जाके उसे भी बता देगा कि भैया आ गया है वो, ढूंढिए जाके उसको। The traces will guide you here. And when the time comes, you'll bring this story to its rightful end. The scent of seawater. It's right ahead. बताओ। ये बढ़िया था Hide in that incubator's experimental unit, are we? I need to find a way to destroy those pipes and make it collapse. बताओ। बताओ। स्लाइडिंग चल रहा है यहाँ पर। ये बढ़िया है गुरु। These must be defense mechanisms designed by whoever built this land. एक एक करके सारे डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे हमें बेसिकली। सही है। और
बताओ, अच्छी खासी ट्रेंड है वो। The more devices I destroy, ये क्या एको है क्या the उसका? stronger the defenses become. फिर चलना पड़ेगा ऊपर। पता नहीं और कितने डिस्ट्रॉय करना है। बताओ, ये भी सही है। फाइनली पहुंच गए लास्ट इसमें। ये भी बढ़िया है गुरु। अभी ये कौन है? Found you. है? अरे यहाँ पे लूपा यहाँ पे कैसे छुप के बैठी है? I mean, what's going on? Why is she here? There's a village ahead. I'll go talk to some locals. Rectify. चलो लोकल से बात करते हैं। Let's see. Ah, I knew it. The Blue Furies remain undefeated. Folks always write them off, thinking they're just sailors or singers. That don't matter in the arena. It's all about pure strength. Most of the teams in तुम this बकरी year's बंटी कर finals लो aren't यार। even backed by local nobles. So what? Worried about your bets? How many times do I have to... Hey, All right, all right. Oh, look here, a visitor. Welcome to Septimont. Your clothes aren't from around here. You from the new Federation? कौन सा फेडरेशन? From the endless void I come. ये बढ़िया लाइन। Ah, making jokes already. I like your style. Anyway, enjoy your stay here, friend. We just watched a live match. It's too bad you missed it. Mattia from the Blue Furies gave the other team a right pounding. aye. Capitolini Hill's holding the Great Aegon now in the city. Happens every 4 years. All of Septimont's talking about who'll be the next champion. You here for the games too? No. हम तो I'm आई looking है for लुक someone. है। वही लुकने के लिए आए हैं। This time? That might be tricky. Folks from all over Solaris are flooding into Septimont lately. बात Who's तो it you're सही है। looking for? This here is the first stop for ferries heading to Capitolini Hill. Maybe we've seen him before. Can't say I've seen anyone like that around. अरे इधर कोई जानता ही Most नहीं उसे। Dragonese we see here are from the Troop of Fools or the Montelli Nobles. They're a bit more open to our ways of thinking about faith. If she's wearing the Order's emblem, though, she'll have drawn some eyes. After Cartethyia and Fleurdelys' frequencies merged, she got her body back. If she passed through here, people would have seen her.
A half-human, half-lion creature wearing armor and swinging a poleaxe? That's gotta be the guardian echo of Septimont. Our lioness of glory, Arsinosa. बताओ गार्डियन है वो. Can you tell me more about this guardian echo? Oh, gladly. See, ever since our ancestors set foot on this land, we Septimontians have fought the harsh elements and the savage tacit discords. अच्छा. Many brave souls came before us, their reverberations settling in the stone that now stands as Arsinosa. She was born from the battle's roar and the fierce bellows of pride. As the guardian of Septimont, Arsinosa usually only reveals herself during the Great Aegon. To earn Hold her on, blessing somebody on is the- the highest honor Yeah. any Septimontian could hope for. Yes, nothing. So let's continue with the story. But why would Cartethyia take on Septimont's guardian echo? कुछ तो होगा ना उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा If ऐसे you want तो to ये see होगा. her, just wait for the finals. They'll be held in the Colosseum in the city. But don't dawdle. Get a ticket now, or you'll miss out. देखो कुछ भी बोल लो. ग्राफिक्स और बाकी सब वाइज ना बहुत मजा आ रहा है. लिटरली बहुत रिफ्रेशिंग लगा. As for that order girl you're looking for, you might try asking in the inns around the city. वो तो पूछेंगे ही हम. Hey, Edwin! Come give me a hand! कौन चिल्ला चोट कर रहा है. Right. We best be off. If you want to But see I'll- the fights, follow this path to the arena. ठीक है. Ticket booth's just up ahead. चलो इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद. चलो let's see the fights. कौन फाइट कर रहा है? ना तू उधर ही बैठ है ना. पता नहीं क्यों. कोई लेने के लिए आ गया किसी को मिल रहा है यार. What's this? Its frequency is similar to the echoes in Raguna. Could it have originated from Imperator's power as well? देखो देखो. But it's unstable, as if something else is interfering. Strange. It's just like Abby said. I can feel its source close to the city, but can't pin down where exactly. Boss, you're looking so serious. ये कौन है अब? And you are... Is this a new 4-star or something? Me? I'm a traveling Taoist from Mengzhou. Just call me Buling. No way she is an NPC. Right? अगर ये NPC है ना तो इन्होंने literally cooked. Exorcism, talisman divination, fortune telling. You name it, I bling it. So, No, you're you 4-star. wanna try your luck, Pa? What do you mean by अच्छा मुझे लग बॉट How सुनाई did you दिया. know my name? Heard about you from an old friend. You know Jinshin? Pretty sure you met her in Jinzhou. She trained with the same master before me. तो वो यहाँ से दी क्या? We've got history. Last time I went up to the mountain to see her, she mentioned you. बताओ. So I hear you're looking for someone? Not so easy, not so easy. The feng shui in Renacita is not good. The tea is trapped underwater, not good flow. No luck now, bad sign. You should be careful, boss. You show up and the stars change. I was betting on who could break the deadlock, so I'm glad I caught you first. What do you mean by that? बताओ जैसे आई वैसे गायब भी हो गई.
चलो काफी सारा एरिया तो रिवील हुआ है इसमें. What is this? Eco challenge fight. ये वो बॉस होगा. Lordness of Glory. Let's see. Chat करो इससे. To us Septimontians, they are a strong comrade in arms. They're Information also निकाल the दे. guide who led us to our new homeland. Like the Ragonesi, our ancestors were displaced and forced to sail through stormy seas. But I think that was a test of our strength. It tempered our bodies and minds, teaching Acha. us that humanity itself is the true hero of Septimont. Without the blood spilled and sweat shed, Septimont would have known no peace, no stability. मतलब उसने जो बताया था वो सही था. Kind of a warrior type के लोग हैं यहाँ पर. The इस continent. Ragonesi lost their मैंने way, इस नई जगह treating पर. the Sentinel like some kind of divinity. They forget it's the strength of people. that Divinity counts. वगैरह पे भरोसा नहीं है इन लोगों को. And that's just cowardice. An easy escape. Here, if we build statues, it's to honor the heroes of the hunt. Although, I've heard things are changing over there in Raguna lately. तो होंगे ही वो चेंज. इससे पूछिए. अरे बड़ो. You want to know about Arsinosa? She's the heart of our land. If you visit the downtown area on Capitoloni Hill, you'll see it for yourself. The Griffon statues are everywhere. सही They've है. been part of this archipelago since ancient times. We used to fight them, but we've always respected their strength and bravery. सही है. Good. Septimont, strong emotional frequencies tend to settle within things. That's how Arsinosa came to be. She was once just a Griffon statue, but the people's burning desire for victory transformed her into Septimont's Eodicus echo. It's a kind of testament to our will. I've heard that the Sentinel came to Septimont not long after Arsinosa was bad. born. It's said they even met her. I can't help but wonder what happened. As the Sentinel's fellow warriors, we Septimontians pay heed to their actions. But after that, it was the last time the Sentinel came to Septimont. स्टोरी मतलब Maybe छोटे they छोटे saw पार्ट we में could सुनने में handle मजा आ things रहा on our own and decided to entrust the city to our ancestors. If that's the case, it's a grand honor, don't you think? है. बात तो सही है. Arsinosa. She will stand watch over our land now and forever. लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है उस आर्सेनोसा में. ठीक है. और हैं? Not bad! बताओ आगे सूंघता कौन है बे? Think you can keep me from fighting? Careful now! We'll see who rips whose throat out first. बताओ. All right, Emilio. Why don't you take your band of cowards and get out of my way before I decide to handle it myself? Pulling dirty tricks before the Aegon. Did you think I wouldn't notice? Did you ever stop to think you nearly got an innocent person killed? Shame on you. देखो कैरेक्टर डिजाइन की बात करूँ तो सॉलिड है. Not bad. Looper. So you're really not going to reconsider? Even with the finals just around the corner?
reconsider. You think I should keep playing along and stay blind to your match fixing? Mic fixing? बताओ यहाँ पर भी मैच फिक्सिंग चलती है क्या? I don't care what you do off the field, but in the arena, fairness isn't negotiable. If you can't get that, just keep wagging your tail for the house. You know, I once thought you were a decent gladiator, and we fought well together. But look at you now. Pathetic. बताओ बेइज्जती कर दी. अब फिर खड़े हो गए तुम. उल्टे हाथ का सीधा चमाट लगाई. You know nothing, Lupa. Not everyone has the same strength to survive in Septimont with a clean conscience. Sorry about that clown show. Don't judge Septimont by a few rats that can't hold their own in the dirt. They're not the norm here. कौन है तू है? Lupa's the name. Gladiator by trade. Guess we're acquainted now after crossing blades. Care to tell me your name? Got it. It's rare to meet someone with your kind of strength. कि हमने तो इससे अभी फाइट किया ही नहीं है. बताओ. Combat makes the greatest warriors. You're a fine example of that. What happened just now? Did they try to ambush you? Just about. That man, Emilio, used to be my partner. The Silvers were probably behind this. The House of Silver is nobility in Septimont. I share their name, though. I'm sure they've thrown me out since I stepped away from the team. Is this tied to the match fixing you mentioned? Yes. I knew something was off, but I didn't think they'd go this far. Maybe they threw some serious money at it. I thought the money I made them would have been enough. Oh well. अब क्या हुआ? I was thinking, you're not a local, are you? How about... अगर ऐसे कोई सूंघेगा ना पहली बार आ गए तो सबसे पहले तो चप्पल निकाल के मुंह पे भरूंगा मैं. अरे चल गया रहा. We team up and fight together in the finals! बताओ ये कार्टेथिया का यहाँ पे ये कुछ दिख रहा है. Head. That's Cartethia's frequency. But how? तो थोड़ी देर पहले तो फाइट किए थे. Is that your way of saying yes? I'm sorry. Lupa, have you ever met a Ragunese girl by the name of Cartethyia? Cartethyia? Nope, never heard of her. What's going on with her? She's missing. I'm looking for her. I tracked her to Septimont, and it seems she confronted Arsenosa. और Arsenosa is the symbol of our spirit, the great Cool, echo though. guarding Septimont for centuries. Besides the current F4, Augusta, nobody has ever faced her directly. I don't know if this Cartethyia of yours is strong enough to take on Arsenosa. If she did, it would be the talk of ना Septimont. ये ऐसे ही बेटर लग रहा. मुझे बस ऐसा लगा कि शायद कुछ फिल्टर वगैरह से ये हो रहा. I see. No leads yet, then. उसका एक अर्ली एक्सेस वीडियो देखा गया. डैमेज टेस्ट देख लिया. Without Escoffier 60 के डैमेज और विद Escoffier 170 के डैमेज. लोग मोद की Escoffier स्किप करने वालों पर. मैं पहले ही बोला था. मैं लिटरली बोला था
ये अगर किसी को स्कर्ट चाहिए, स्कर्ट को पुल करने का प्लान कर रहा है तो बेटे इसको भी यार पुल कर रहा था, मैंने पहले ही बोला था। जिन्होंने स्किप किया है ना भाई वो निपट गया, वो बहुत तकलीफ होने वाली है उन्हें। Well, that's why you should I mean, join she's me meant in for the like free Aegon. steam ना, When Arsenosa shows up in स्पेशली the finals, रेस्टोरेंट you वगैरह might जो find प्रोवाइड the करती answers है you're तो looking बहुत for. बहुत ज़्यादा है वो। प्लस उसका जो A4 आई थिंक है वो भी बेनिफिशियल है जब टारगेट आई मीन एनिमी टारगेट फ्रीज वगैरह हो जाते हैं तो ये तुम्हारे टीममेट्स को फ्रीज वगैरह रिएक्शन करता है। The champion gets अबे तो noble होना ही था। recognition, a hefty bonus, and some secret perks. If we मेरे win, स्कॉफियरेंस का you can दोनों take भी it all. गारंटीड है। स्कॉफियर तो निकल गई, कहाँ पे गारंटीड है वो अब? मैंने स्कॉफियर निकाल If कर that रखी है doesn't बट interest you, then the I don't have attention enough that comes with being a as- champion will help you find the एस्ट्रेट्स क्या information you बोल रहा need हूँ, on her. प्रीमो जेम्स इतना है नहीं और मुझे आई डोंट थिंक कि मैं मतलब अभी मेरा मूड नहीं है स्कर्ट पुल करने का। True. स्कॉफियर तो निकाल लिया But मैंने। what's in it for you? लेट्स सी, अगर लॉन्च के बाद मूड हुआ तो पुल करूंगा या तो फिर मोस्टली आई विल गो फॉर लाइक कोलम लेना हो गया। Me? I just want to see the look on their cheating faces when they realize I've beaten them at their own game. स्कर्ट के पास अभी 160% डैमेज बूस्ट है, वो तो होना ही था। They're probably betting against me in secret. बट Doesn't matter. लोग ये Once बोल रहे we हैं कि win, वो they'll lose it all. स्पेसिफिक Serves टीम them के अंदर right. या फिर रिएक्शन पे लॉक्ड है वो। I mean, you're facing a boss who has a lot of cryo resistance, cryo resistance वगैरह ऐसा कोई बॉस आया फ्यूचर में तो बहुत तकलीफ होगी उसे। या फिर अभी इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक साइड में या फिर दोनों साइड्स में क्रायो रेजिस्टेंस वगैरह वाले मॉब्स हो रही है, जैसे कि हमने पता वो चिपकली कौन सी थी वो, उस टाइम पे वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। If there's no न्यू punishment अकाउंट्स for वालों crossing the का, line, जो then what's पुराने the अकाउंट वाले point पे of a line at वो तो all? उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हो, नो डाउट अबाउट दैट। जो न्यू प्लेयर्स है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसका फिर भी निकालना है, इसका भी निकालना है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन पे भी टाइड है, उसके लिए फोरिना भी लगेगी। अगर तुम्हारे पास फोरिना है तो उसका जो पुराना इसका सेट है, सेट का नाम बोले वो बहुत प्यारा सेट है उसके लिए। I don't know what other tricks my dear family has planned, but you're an outlander. वही Strong Try too. hard होने No चाहिए। ties to their schemes. That's why I look forward to walking this path with you. Can't wait to see what kind of gladiator you'll be. Alright, you'll see. Just wait and watch. Arsenosa and the unusual frequency I felt from Lupa are the only leads I've got. Lupa denies ever meeting Cartethyia, but maybe she didn't realize. Or she's hiding something. Yeah, she's definitely hiding something. Either way, teaming up with her is my best shot at finding the truth. स्कर्ट एनिमेशन नेक्स्ट लेवल ना, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा स्कर्ट के एनिमेशन टू बी ट्रू। मतलब लिटरली जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। अगर तुमने किसके कार्टेथिया के एनिमेशंस देखे, ट्रेलर्स देखे, वीडियोस देखे तो तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा उसमें। मतलब हाउ कैन दे डू दिस? आई मीन स्कर्ट इज़ लाइक कितने सालों से वेट कर रहे लोग स्कर्ट का, और बदले में क्या मिला? सस्ते एनिमेशंस। मैं उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और ज़्यादा बढ़िया हो सकता था, लेकिन वो सस्ता That's मैंने the बता दिया उन्होंने। spirit! Well then, I'll be counting on you, my fellow warrior. स्पेशली ये कि तुम्हारा ऐसा कैरेक्टर लाइक स्कर्ट जो एक बढ़िया कैरेक्टर हो सकता था, एक गेम ब्रेकिंग हो सकता था कैरेक्टर, उन्होंने लिटरली उसको सस्ता में निपटाया। Now, let's go register our team. स्कर्ट कर लीजिए जैसा फीलिंग लगता। एक्चुअली इफ यू टेक अ लुक अबाउट आर्लेकिनो, तो आर्लेकिनो के वाइड स्टोरेज ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे कंपेयर टू स्कर्ट। हम बाहर क्यों हैं? हमें भी तो लड़ने का मौका मिले।
अच्छा पहले रजिस्टर करनी है मैं टीम। ये लो टीम रजिस्टर कर रहा हूँ। सस्ता और एक्सपेंसिव टीम बना दे रहा। देखो सस्ता टीम तो है ही नहीं Hi there. करके लिए। Is team एक्सपेंसिव registration टीम है still तुम्हें open? चाहिए स्कॉर्पियो, तुम्हें चाहिए फोरिना, तुम्हें चाहिए या तो शनहा या फिर तुम्हें चाहिए ये लॉन एंड योर गुड टू गो। May applause greet you? पोस्टा you तुम can कर सकते register. लेकिन वो बहुत वीक Oh. है। Wait, you're contender Looper. देखो इसकी देख के पड़ गई। Do you wish to register a new team? But aren't you? कोई पागल ही होगा इसका 4 स्टार के साथ यूज करेगा। देखो अगर कोई फ्री टू प्ले है कम्प्लीटली या फिर ही इज नॉट एबल टू पुल और ही कैन नॉट अफोर्ड टू पुल स्कॉर्पियो और फोरिना तो आई थिंक सबके पास होनी चाहिए अभी। अगर वो न्यू प्लेयर है तो हाँ काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। यू हैव टू मैनेज ऑल योर पुल्स एंड ऑल दैट थिंग। लगे कोई पुराना या फिर अभी बीच में ही 1-2 साल वगैरह या फिर 6 महीने से भी कोई खेल रहा है तो उसके बाद एटलीस्ट एक सिंगल कॉपी तो फोरिना की होगी। स्कॉर्पियो का पता नहीं लेकिन स्कॉर्पियो फोरिना तो चाहिए, तब जाके वो मजा आएगा स्कर्ट पुल करने में, आई मीन खेलने में। अगर तुम कोई शील्डर लेते हो तो कलामिटी ऑफ इशू जो है उसका वेपन वो यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी इफेक्टिव है उस पर। अगर तुम Plans नॉर्मल अटैक changed. डैमेज No longer with the Bow of नॉर्मल अटैक Legions. प्लेस खेलते हो This is my new partner. Oh, I see. Allow me to register you again. Have you settled on a name for your new team? नॉट बैड, बढ़िया एनपीसी है वो। Warrior, why don't you do the honors? Wuthering waves. What should we choose here now? बताओ टीम का नेम क्या होना चाहिए? कर के पास ज्यादा वेपन ऑप्शन नहीं है, वही कर के पास वेपन ऑप्शन ज्यादा नहीं है और जो वेपन है वो आई थिंक ऑप्शनल वेपन जो है जो वो यूज़ कर सकती है, उसमें वो उसका आउटपुट परफॉर्मेंस जो लोगों ने कैलकुलेट किया है वो अराउंड 75 to 80 384 के आसपास कुछ तो भी है कंपेयर टू उसका खुद का सिग्नेचर वेपन, तो वो तो हिट होगा ही ब्रो। So let's see. Now we are actually with Lupa, but we are actually playing Wuthering Waves, so let's go for Wuthering Waves. We Septimontians live alongside the waves, and I've always found their sound soothing. Oh, a perfect choice. All right, the But, name is settled. We'd also like to apply for the special qualifier, please. Of course. Please wait one moment. The What is this Gladiators special Aegon qualifier? happens year-round in Septimont. Training matches, exhibition games, open Okay, हम tournaments, ये you भी name ऐसे it. देख सकते हैं। Not bad, काफी इम्प्रूवमेंट है। न्यू प्लेयर्स के लिए मवी का बेस्ट चॉइस है। ऑफ कोर्स मवी का इज लाइक टॉप डॉग राइट नाउ डैमेज वाइज, लोअर के वाइज, और अगर तुम कैरेक्टर डिटेल्स के वाइज जाओ तो मैंने सिर्फ उसको इसके लिए पुल किया डैमेज के लिए, मेटा पर्पस के लिए बस। मुझे उसका डोनेट और बाइक प्लेस से इतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि वो आर्गन ऑफ वॉर है राइट। हाँ अगर वो एक आर्गन ऑफ वॉर नहीं होती ना मूवी का तो डेफिनेटली उसका ये जो उसका प्लेस है उसको सूट करता, फिर वो जो बाइकर गैंग वगैरह टाइप की अगर वो ट्राइब होती वहाँ पर तो डेफिनेटली सूट करता। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। But we're after the Aegon of Champions, Let's the socho. biggest event held every 4 years. We also call it the Great Aegon. जोंगली का एग्जाम्पल लो तुम। जोंगली कौन है, ये उसका क्या बैकग्राउंड क्या है, वो कैरेक्टर कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, और अगर कोई उसको एक हल्का फुल्का कैरेक्टर या फिर ऐसे कोई तुम उसको एक बाइकर बना देते हैं, उसको तुम चोर वोर बना देते हैं, या फिर चोर का मतलब इन द सेंस कोई ये नहीं होता क्या, अरे उसे क्या बोलते हैं वो शिप लूटने आते हैं ना समंदर में, पायरेट। अगर तुम उसको पायरेट वगैरह वाला लुक देते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता जोंगली? बिल्कुल भी नहीं राइट। एक टेस्ट होता है वो। बताओ तुम एक ऐसा आर्गन जो लिटरली 6000 साल तक जिंदा है, जो पूरा निपटा, उसने इतने सारे बॉसेस वगैरह बाकी के आर्कन वगैरह निपटाए आर्कन ऑफ वॉर में,
और अगर तुम्हें उसका लुक मिलता प्ले एज अ प्लेबल कैरेक्टर, जैसे कि भाई ये वो एक पायरेट वगैरह है या फिर वो ऐसे ही कच्चा छाप चोर वगैरह ऐसे ही कुछ दिखाया जाता है, मज़ा नहीं आता तुम्हें वो। उसके कपड़े वगैरह एकदम से बाइकर वाइकर डाल के वो बाइक वाइक चला रहा है, मज़े नहीं आता। बट वो फील आनी There are चाहिए ना two उसका। stages. A points-based prelim and an elimination round. The वही prelim का is सपोर्ट भी almost करती है, over. यस आई नो। The eliminations are about to begin. I might actually go out of my way and pull for Mavika C2. I think C2 ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी। मेरे पास C1 है ना, C1 R1 है मेरे पास अब Mavika। I've earned enough points from the regular But let's matches to see, qualify for अभी the कुछ डिसाइड finals, नहीं but कर रहा मैं। since you're a new contender, you'll need to win the special qualifier to make it. Because I don't have a cryo DPS yet. Cryo main DPS मेरे पास कुछ कोई है नहीं, तो maybe I can, अगर मेरा मूड स्विंग हुआ, मुझे अगर मैंने ऐसा लगा कि भाई मुझे अभी चाहिए cryo DPS, maybe I might actually build for Skargupana। देखो 50-50 लूज होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा मेन गोल है इसके लिए जमा करना। देखो तुमने ट्रेलर अगर देखा है तो ट्रेलर में एलिस वर्का, और अगर भाई सब एलिस अगर प्लेबल हो रही है तो मतलब कहीं से भी कंफर्मेशन मुझे इतनी सी भी मिल रही है ना कि भैया एलिस प्लेबल होने वाली है, तो मैं सारे बैन स्किप करने वाला हूँ, मुझे निकलनी है एलिस अगर वो प्लेबल होने वाली है तो, विदाउट एनी डाउट। लिटरली बहुत बढ़िया कैरेक्टर होगा। अगर वर्का आई If we थिंक वो defeat प्लेबल हो higher ranked सकता है, opponents, we वर्का can के लिए भी secure मैं a सेव spot करूँगा, with fewer डेफिनेटली matches. वर्थ इट है वो। और साथ में कोलम भी ना तो मतलब आएगी। डिटोरी का पता नहीं मुझे, डिटोरी अगर हुआ तो सही है, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा वो प्लेबल, अगर हुआ भी तो मुझे उसके लिए इतना कुछ खास मन नहीं हो रहा पुल करने के, लेकिन वर्का डेफिनेटली पुल करूँगा मैं विदाउट एनी, मतलब Just the सोचेगा ही two of नहीं। us. वर्का का मुझे अगर बैनर डिटेल्स Is it मिले तो मैं 2-on-2? उसके लिए जाऊँगा गारंटी। Exactly. goes for Colum It's भी one ना। of the reforms the new F4 made to the Aegon. And of course, सो इतने सारे our ऑप्शंस Echo है तो partners will इसलिए be मैं joining us in the उस arena कर पे मेरा too. मूड नहीं बन रहा पुल करने का। Echoes aren't just companions to us, but proof of our strength. Hunting them, taming them, and learning to live with them is the first lesson every Septimontian learns. Now, it's time to step into the arena. Ready? I was born ready. Let's go. Registration completed. Happy hunting, contenders. Let's see how well we Well, work together let's in the hunt them arena, down. my fellow warrior. ठीक है। Hold on, Ethan. Start the fight. Are you ready for the gladiators, Aegon? अरे हम Happy hunting, gladiators. जन्म से रेडी है, तुम चलो। बताओ वो नारा। Wuthering waves versus molten mining. वही तो माइनिंग, ठीक है। What is this? Hopefully this helps. Waves rise. Judgment strikes! And purging all evil. ये उसको निपटा दिया। Perfect teamwork. You make quite the hunting party. We'll face judgment! Tempest of slashes. निपटा दिया भाई उसको पूरी तरीके से। No if, no but, no much much. Oh, we did it! ये तो इतना ही था। That was perfection! Haven't felt this alive in ages. Ah, I could finally focus and savor every moment of the fight. Oh, thanks, warrior. Teaming up with you was the right choice. ये फाइनल्स तो नहीं थे ना। And these are... To does. These little ones love a good match and never miss a chance to cheer for the victors. They're So more you- fired up than usual. Looks like your performance really won them over.
बताओ। अरे 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 They're just as lively as the baby griffon I came across before. This city does know how to keep spirits high. Speaking of griffons, they've actually been here long before our ancestors even settled on this archipelago. Anyway, we've secured our first victory. The next match will be held further out. If we take down the top-ranked team there, we'll be... Oh. What's this? Oh! Cartethyia! Please! Sign for me! अरे It's you! In the flesh! Why would a star like you be in this But, arena? It's impossible to get a ticket for your matches. Oh, I wish I'd known sooner that you'd be here. Did something happen with the Bow of Legions, Contender Lupa? Who's this new gladiator you've got with you? Did you replace Contender Emilio? Oh, that's front page material. Hey, make some room! Lupa, I loved your performance. Please, बताओ। will you sign for me? ये तो मियावी वाला सीन हुआ कि मियावी प्लीज स्टेप करने वाला। कैरेक्टर डिजाइन तो सॉलिड है It लूपा comes का, with the job. लेकिन टू Gotta draw a बैड crowd in, both in and गलत out पैच of में the आई वो। arena. I would definitely pull for Lupa if she was not in this current patch. It's just bad luck. All right, everyone. मुझे अभी वेपन भी निकालना है कार्टेथिया का। I can handle this, but it will take too long. We need to make a swift retreat. But also swift retreat तो मैं ऐसे लोगी हैं चप्पल मारो तेरे को। But how? Easy. Just hold my hand and don't let go. अरे 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 ये स्विफ्ट रिट्रीट कैसे हुआ भाई? आओ फोड़ो फोड़ो फटाके फोड़ो। Yeah. What is this? ये क्या चमक रहा है? अरे बाद में कलेक्ट करेंगे यार, स्टोरी कंटिन्यू करता है। Good. We made it out. I'll let बाहर the तो staff आने at the का। next arena know we're coming to avoid the same chaos there. ठीक है। Matches are the bread and butter for gladiators. The famous ones rarely take on impromptu matches. That's what caused such a stir. देखो फिलहाल हम एस्ट्रॉइड तो बहुत सारे वार्म कर सकते हैं। There's Word no about our issue new with that. team is gonna spread एक पूरा का very पूरा quickly. एरिया मतलब मैप हमें एक्सप्लोर करना है। पिछला मैप भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हमने, पिछला रीजन तो उसमें भी और ये करंट रीजन दोनों एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली 10 बार आ जाए तो एस्ट्रॉइड मिल जाएगा। अब क्या हुआ इसमें? What was that smirk about? Oh, me? I just sent word to certain people. अब मुझे सस्पिशियस Too लग much रही है। modesty is a double-edged sword. So, I'll be frank. When it comes to bankability, I'm at the top of the game. लग तो नहीं रहा। That's how my family, the Silvers, have kept their position all these years. But the nobles here in Septimont are always hunting and contesting for more. बताओ वो तो करेगी ना। Lions and wolves tear each other to pieces, while the hyenas lie in wait, eyes on their bellies. Everyone wants a taste of the juiciest meat. वो तो वैसे ही And बना with the है। illegal betting they're running, once they hear I've left the old team, they'll all be scrambling to get a piece of the action. Are you planning to muddy the waters? The waters are already so murky, no one can tell who's stirring them.
डिजाइन तो डेफिनेटली बढ़िया है. But it's still better now than it was before. The mess they made before the current effort took over was... अब क्या सुन रही है? May applause greet you, Lupa. Huh. I see you've been waiting for me, Cartor. बताओ. He was my manager back in the Bow of Legions. Has a gift for knowing exactly what to say to anyone, though that's his flaw too. For a manager, isn't the skill of speech always a gift? पता नहीं. Domina Julia Silva hoped you'd behave and return home. She bid that I reason with you at the earliest opportunity. But it seems you've found yourself a new ally. I dare say her hopes are dashed. And? What's your point? How disappointing. Not even a hint of charm when there's no crowd around to impress. Feeling confident about this new team of yours? What do you think your chances are of winning the championship? With me and this warrior? 100%. और Enough, Cartor. Spare me the games and empty chatter. I have one question for you. Are you involved in the Silver's match fixing? बताओ. No. I do love money, but I don't stoop to that level to get it. Fair enough. You may leave now. Dangerous question, Lupa. Think carefully. The Silvers may have made you a star, but they can just as easily snuff that star out. बेटा I've थप्पड़ never लगाएंगे doubted your चप्पल से. talent, but these are the rules of the game. I know the rules well enough. I just wonder if Domina Julia truly understands who's making the rules now, and where she stands in this game. बताओ. सीधा धमकियां दे रही हूँ भाई. Is this Cartethyia also from House Silva? Not exactly. What is this? He's a free man, though he's handled Bow of Legion's business for the past few years. Look! Huh. Once we cross the Hero's Way, we'll get to the Cartethyia Hill district. The next qualifier is just ahead. Once it's over, we can take the cable car to the upper city. On an autumn day, the view as you ascend and the breeze on your face can truly lift your spirits. ये एक्टिविटी कर लो पहले ताकि टेलीपोर्टेशन इजी हो जाए. You are them. Are you ready for the gladiators, Aegon? हाँ हम रेडी है. चलो Happy मैच hunting, शुरू करो. gladiators. लगाओ तुम मैच. ये ऐसा भरेंगे हम उसमें. ऐसा भरेंगे. बख्त भरेंगे. Wuthering waves versus Fleurdelys. वो टैसिट डिस्कॉर्ड क्यों चाहिए तुम्हारे पीछे? Waves rise. Judgment strikes! The wicked will face judgment! Tempest and slashes. The wicked will face judgment! उसको तो उठने ही ना हो रहा है. उठते ही भरता है वो.
Hold on. Shame ये it's किसे only मार रही exposing your weaknesses. Great work! Your skill is fueling my bloodlust. Not bad. But लूपा का गेम प्ले हम देख नहीं पा रहे. Which is a bit sad. Shit. Cartethyia, standing on the water. अब इसे visions will do. That abnormal sensation came over me again when my sword struck the contender's echo. All the echoes in Septimont seem to exhibit unstable power. Something is definitely off. But it seems like मुझे no भी one कुछ else off has लग noticed. रहा है. Contender Lupa isn't in the Power of Legions anymore. What a shame. Just 2 days before the finals as well. It's unfair to her former teammates and her fans. Is it about the money? She's changed teammates how many times now? As for that newcomer next to her, Without the Silver's patronage, there's no way a gladiator from the outskirts could rise to fame so quickly. Quiet down. Where are you hearing these rumours? Open your eyes. Wilbur has never once thrown a match. Everyone thinks they know the real truth. But consider this. It's a fact I know to be true. बताओ MC रुकना हुआ होगा. Let's go, my fellow warrior. ही दिन में 15 मैच It's करवाओगे all क्या? going as planned. Let's get you settled somewhere comfortable. Then tomorrow, we head to the Colosseum Olympus for the semi-finals. I've been meaning to ठीक है, ask, सही है. is there a body of water in the city? I think Body Cartethyia of might have water? passed through there. A body of water. Yes, but it's been abandoned for years. That elevator can take you to the upper city, though. चलो फिर चलते देखते हैं. If you want to try looking for her, we can start there. Thanks. And, Yes? those people just now, they talked about match fixing. Don't you want to challenge that? I didn't have time to gather enough proof before I left. Besides, this isn't the right moment. कुछ Once तो we win गड़बड़ the कर Great दीजिए. Aegon, I'll make everything public. In Septimont, only the winners get to speak their truth. बात तो सही है. A strong warrior with a kind heart. Rare traits for a hunter. Honestly, I don't care what people say. This kind of thing happens every day in Septimont. If you can't handle it, you won't last. Tarnishing rivals' Say you. reputations is one of their usual tricks. I cut off their betting profits, so it's only natural they'd be upset. Besides, now I have a reliable warrior by my side. That's all that matters. No worrying about whether my teammate can keep up. No dealing with petty politics. Just the thrill of the fight. चलो फिर. Thank you for that, my fellow warrior. Why would the place you mentioned be abandoned? Because of the first dark tide in Raguna. Oh, you know what a dark tide is, right? नहीं. Yes.
Due to certain safety concerns at the time, the main city district was relocated further up the hill. चलो ले चलो ना। देखो वहाँ के कामगार को हम यहाँ पे लेके आए एम्प्लॉय को। You said Cartethyia might have been here. क्या मुझे एक और DPS की जरूरत है? I can help you with. I think मेरे पास काफी सारे DPS है अभी। 1, 2, 3, 4, Anything I can help you with. 5। The power to split and merge matter. I think 5 मेन DPS तो है मेरे पास। इतने काफी होने चाहिए, राइट? मेरे को बहुत पसंद आई कार्टेथिया कैरेक्टर भाई, बहुत बढ़िया है। एनिमेशन सी ये सब वो घंटा गाड़ी बढ़िया। बताओ चेयर पे बैठ के चिल मार रही है। This is the place. I'll look for Cartethia's traces here. Dundo. How? Through the connection we share. All right then. I'll wait here. Good luck. बताओ इम्पेरेटर की पावर बुला के वो चेक कर रहा है कि कहाँ भग गई वो। कुछ तो दिखा इसे, नहीं यहाँ पे है ही नहीं। बट इसके हाथों पे उसका ये अभी भी तक लगा पड़ा थ्रेड्स उसके। How's it going? You look frustrated. बताओ। That's right. I'm sure you'll make progress by the finals. Hercules. His statues once stood tall on both sides of the street, watching over the heroes of Septimont as they set out to hunt. Back then, the chimes drifting up from the city with the finest sounds of glory. Sweet, dude. Beware of the Kerosaurs lurking below. Those tacit discords will ambush anyone who falls into the water. Were those the city's ruins down there? Let me see. Yes, remnants of the old district. We rarely use this route since it's too dangerous, but some thrill seekers come here to hunt tacit discords. Speaking of which, this area is actually under Silver jurisdiction. I used to play here as a child. $10 में इसके स्किन मिल रही है, ग्लाइडर और स्किन। Cartethyia. I've never heard that name before, but it feels strangely familiar. ये यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। Someone's still alive.
Are you okay? You seem like a local. Are there any other survivors? I'm managing. I can still move, but I'm exhausted. I've walked for so long, for so far, but I still can't leave this city. बता रहा हूँ बहुत बड़ा प्लॉट छुपा है इसके पीछे. अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता The नहीं. white tidal blight follows me wherever I go. Okay. Tidal blight? Could she mean the dark tide? हाँ वही अभी क्लिक करके देखा मैं उसे. What's your name? I don't remember. So is she the real Luba and हम जिस लुबा के साथ घूम रहे हैं वो कोई और है, ऐसा हो सकता है? I don't know. कुछ भी हो सकता है तो. But इसके हाथ तो उसके That's threads all है. right. Memories can be recovered. And so can your name. I've been through something similar myself, and someone helped me find my way back. तो तुम इसको हेल्प करो. I've only just arrived here. All of Septimont is cloaked in mist. Would you mind sharing with me what you still remember? बताओ. Who are you? My name is Cartethyia. I'm Raguna's... I'm a wandering knight from Raguna. That's सही है. A wandering knight. कुछ तो याद आया इसे. भाई ये कौन बंदर के बच्चे? Don't worry. I'll take care of them. ये सिग्नेचर वेपन चाहिए. Come forth and face my blade. अरे Welcome to my city, Griffon's fortress of Capitolini Hill. ये मैं बता रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है इसमें. What if this Lupa is actually कौन थे वो स्टोरी में विलन? यार मैं उसका नाम ही भूल गया. बताओ इतना टाइम देती है कि उसका नाम भूल गया मैं. पढ़ लो आप. मे भी उसका कुछ चाल वगैरह हो या फिर स्कार पीछे बैठ के कुछ स्ट्रेन दिला रहा है. Who are they? स्कार की इंटरव्यू होगी ना अभी. Oh, some minor noble houses that didn't make it into the Aegon. आई मीन ट्रेलर्स वगैरह में तो देखा था मैं स्कार को. हाँ तो भाई स्कार के लिए भी तो बचाना है एस्ट्रेट्स. In Septimont, बहुत strength दिक्कत है. and power go hand in hand. सी पूरो मान Nobles रहा है get इसके more, बाद एक but they जहरीले better कैरेक्टर prove they're निकाल worth it and pull their weight for the city. The Aegon isn't just about fortune. तो वो तो मैं बहुत लकी हुआ इस आईडी पे. For इसलिए अच्छे nobles, खासे the ability to command and Presidential control Billboard. echoes is a basic responsibility. If the heir of a noble house isn't strong enough, it signals that the house is unfit to hunt down tacit discords or protect Septimont. So, if a noble's been living it up, they'll end up broke and thrown out of the city after paying high patronage fees for a gladiator who doesn't even make the cut. बताओ. Might not work like this everywhere, but here in Septimont, with the dark tide breathing down on necks, it's our survival code. No. For most Septimontians, the Aegon isn't just an event. It's the training ground nobles and commoners alike have to fight in. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. Where you come from doesn't matter. Prove yourself, and the crowd will scream your name. The spotlight's yours, the arena's your stage. चलो फिर.
But if you can't keep up, if you're not chosen, What do you you'll be mean left by in the you are not? shadows. If you are not sure, इसके पीछे भी कुछ सीन लग रहा हूँ. Oh, come to think of it, we haven't had anything to eat since those 2 matches. Right, I know just the thing I want you to try. Oh, I can चलो already जानी smell काम पे it. चलो. Can almost taste it. बीच में मैंने बहुत सारे एस्ट्रॉइड कर दिए लाइक फीबी पे तो हुआ ही है लेकिन फीबी का वेपन के लिए मैं yeah. जबरदस्ती गया था 2 large platters, please, with 2 bottles of heart pour. तो इन दोनों चीजों की वजह से मेरे पे एस्ट्रॉइड थोड़े कम पड़ गए क्योंकि मैंने फीबी का भी वेपन निकाला heard she left सानी the का भी Bower of वेपन निकाला Legions. और मैं शिकोना को भी That's enough, 50 लूज folks. करके You know the rules. No हाँ gossip उस पर गया outside था the पॉइंट arena. पर गया लेकिन एवरीथिंग मतलब Just जो भी dig in. किया मैं इट वाज वर्थ इट Still got that fire, huh, Fulvia? You should talk. Finally cut ties with the Silvers, eh? With the way they handle the share of profits, you should have left sooner. Well, back then, a strong backer was exactly what I needed. Can't say it was all bad. So, this is your new partner. Looks like you can handle yourself. भैया लॉर्ड ऑर्बिटर उसको ऐसे ही थोड़ी ना कहता था बताओ Well, well. You better prove it in the Aegon then. By the way, Heart Pour is sold out today. Guess the celebrity branding really worked. वो ना What? मादरी Oh, come on! What's heart pour? yeah but what's this A drink I endorsed. Most of the drinks I promoted were... but this one's actually really good. बताओ पिलाओ फिर हमें भी If my name's on it, you don't have to worry about quality. It's just that the taste... Well, let's just say it's meh. At best. अरे Anyway, I'll get you a taste of heart pour later. For now, let's enjoy the meal. तो आप ये मंगवा देना गधी So, fellow warrior, any stories to share? There is still much to learn about each other. बताओ चाय पिला रही है जबरदस्ती Hey, Lupa, got a message from old Abius? He said the new batch of restored footage just arrived, including those about Contender Mia. अब ये कौन है मियाँ Thanks! Oh, I almost forgot with everything going on lately. Restored footage. Recordings of major matches or famous contenders. Helpful for those who want to learn from them. Ephor Augustas are the most popular. 4 years ago, she became the champion and a household name by crushing every single opponent. From there, Oh, really? she worked her way up into the Ephor's seat. don't tell me अभी But कोई I है prefer Cartethyia watching Contender Mia's matches over any of the past champions. I think she's got real heart. You can feel it, even through the recordings. The way she threw herself into every fight. Do you think recording तो we'll face बताओ her in this Aegon? Not likely. She disappeared during a great Aegon years ago. Some say she got tangled up in illegal betting scandals. Others think the pressure from her manager drove her to leave Septimont. There are plenty of rumors, but no one knows what really happened. देखो ये तो प्रूव हो गया जहाँ पे भी PvP है वहाँ पे it's बैटिंग और frustrating चीटिंग तो to होती है just disappear halfway through. If you fail to make it to the end, people will see you as nothing. Solace never disappoints. Their dishes hit the spot every time. Now that our bellies are full, time to relax. To Leonidas Hotel.
it's the best place for travelers in Septimont. I've got a long ये time मजा है there फ्री भी myself. निकाल के खेलने के लिए। ट्रैवलिंग बहुत इजी हो रहा है, मजा आ गया। Ta-da! Welcome to your new एक चीज में spot. पावर It's क्रिप a lifetime suite, है इस and it's गेम में, yours और वो है anytime you need it during your ट्रैवलिंग stay वगैरह। in Septimont. बाकी कैरेक्टर्स में पावर लेवल डिफरेंस तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, लाइक 8-10 मैक्सिमम 10-15%, इससे ज़्यादा नहीं है। The Black Shores, huh? I'd love to see it one day. Maybe when the time's right, I'll venture beyond Septimont and explore the world out there. You know, gladiating means everything to me. I really, really love it. I know I'm lucky. I know what I want and I'm doing what I love. Compared to those drifting through life, I've already been given so much. But sometimes... Sometimes क्या? Well, I'm not unhappy. I was born for this, but the more I embrace it, the more I fear losing it. I can't help but wonder, what is it that fills me up when I'm under those lights? My passion for the fight? Or the favor it brings me? If one day I lost that favor, would I be more helpless, panicked and heartbroken than those who never had it in the first place? If that day comes, would I still be able to say I love this life? बताओ, दुख दर्द पीड़ा इसे भी है। You're right. I hope that love never fades. Not until I'm buried in the Veil of Glory. Tomorrow's the semi-finals. We'd best get some rest. चलो फिर। दिन भर तो वैसे भी थक चुका है ये अपना MC, उसको सोने तो यार। अब क्या हुआ? Good night, my fellow warrior. बताओ, इसे क्या हुआ? देखो, कुछ तो दिक्कत है। ये कैसा गैलरी है भाई? बाहर का कुछ दिख ही ना रहा इसमें तो। और ट्रैवलर्स गाइड टू सेप्टिमॉन्ट, सेप्टिमॉन्ट। व्हाट इज दिस डेलिस्कोप? बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है। अबे ये तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, आओ जानी, सो जाओ जरा। Words. Lines of them. They're all around me. And music coming from above. वो क्या था? मैंने कुछ देखा हुआ था। पढ़ लो, लगा ही था मुझे। This is but an illusion. One of the nights. One of dreams. Not like the spectacle you saw in the glimmer of the carnival. ये भी तो रिलीज होने I वाली है। am not your foe, nor can we harm each other, should we so wish. Lay your blade to rest, if only for now. 'Tis a pleasure to see you again, on this special stage. A city wild and beautiful, chasing endless glory. Tell me, does Septimont please you as much as Raguna once did? ये पूछो। When one wrestles against the torrents of fate,
भाई Every स्कर्ट signpost स्कर्ट is तो an ब्रोकन anchor, निकल गई बताओ guiding you toward the infinite horizon. एस्कॉफियर नहीं है तो ब्रोकन ब्रोकन Let's तो नहीं है take अभी our एस्कॉफियर time. चाहिए उसके लिए I would like our talk to be pleasant. No one will bother us here. I have an associate who adores the heroic tales told throughout this land. For this reason, the Bro, missing girl you seek and the Kuro anomaly you बहुत sensed in Septimont, गाली देने का मन कर रहा they are indeed threads in एक this के बाद एक tapestry. सारे कैरेक्टर ऐसे जहरीले You कैरेक्टर could ला रहा call है it कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे an एस्ट्राइड्स obsession of his. सारे कैरेक्टर वर्थ इट है पता पुल करने के लिए Every एक कैरेक्टर hero's ऐसा नहीं tale छोड़ा begins जिसको मैं with a स्किप मार trial. सकूं Your जबरदस्ती के wisdom and स्किप मारने पड़ courage, रहे हैं your compassion and resolve, your hope and madness. Will they be strong enough to carry you through the trial? To make you the hero of the story? Read it. I hope the story speaks to you. The answers you seek lie within these pages. बताओ If we continue to meet as foes, the symphony grows monotonous. I confess I find it rather uninspired. मुझे भी ये देखना है कि जब ये रेजोनेटर ये होगा शोकेस होगा व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद हर अदर आई फॉरलोवा का दूसरी आंख जो है ना वो देख रही है उसमें क्या राज छुपा है उसमें I'll ask again, Fleurdelys. What are you doing here in Septimont? And why give me this? I am giving this story a little nudge. As of now, you and that blessed maiden from the tower are deeply interwoven in the fate he has spun. So you're not the only overseer active in Renacita. लोटल स्कार भी यही बैठा है नहीं Scar, your nameless ally, and you. The Fraxidus seems to revel in the company of those with twisted obsessions. It's not as you imagine. You've already met my associate, you see. He trusts what he sees, not the words of others. I've already crossed paths with him since arriving in Renacita. As a creator, he always hopes his characters will craft twists and turns that he himself cannot foresee. He believes that the closer one stands to the protagonist, the greater their influence over the tale. But the true lead of the story has yet to emerge. बता रहा हूँ कुछ बड़ा प्लॉट छुपा है इसके पीछे I gave you this play so you can see the ending. That gladiator girl will be the harbinger of the dark tide in Septimont. अरे All glory will be consumed, and the pride of heroes will dissolve within a blackened maelstrom. Such is the finale she holds most dear. This is a short story, one that only lasts 3 days. When the final match concludes, फिर so बकचोदी too करेगी will ये this story. You could claim the spotlight by ending her life before the curtain falls. Change the ending, and the tragedy is averted. But should you falter, or worse, warn her of what's to come, the consequences will spiral far beyond anything you can imagine. What you're proposing, I do. Tell me, what reason do I have to trust a word you're saying, Fleurdelys? You don't need to trust me. Let my words slip from your thoughts if you wish. As I've already said, the story will unfold as my associate has written it. मजा आ रहा है The सोफा choice lies with you. बोलने का मन ही नहीं It is करता a freedom we all hold. Even the wildest imaginations draw from what already exists.
So it is with this story. It follows a template, and even its creator cannot escape its confines. Choose wisely, Rover. Time is still on your side. For now. I look forward to your performance in this grand finale. बताओ जय अब ये क्या Lupa is followed by the dark tide. ठीक है देखते हैं अबे ये तो बाहर ही खड़ी है ये दिन भर बाहर ही वेट कर रही थी क्या हमारा Morning, fellow warrior. Huh. You don't exactly look well rested. Flova may not have told the whole truth, but there's no denying the anomaly here in Septimont. Neither Lupa nor the others here seem to notice. And that fleeting image, Lupa turning into that unfamiliar girl. I need more clues before making any decisions. I'm fine. Just a bad dream. Let's get going. Our next stop is the Colosseum Olympus, right? You got it. Let's get going. चलो फिर अगले फाइट के लिए चलता है होल्ड ऑन इसका ब्रेड मैंने कुछ ज़्यादा ये करा कर रखा है क्या What is this lower wire volumetric fall volumetric lightning motion blur क्राउड डेंसिटी का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता What is this wounded effect? ये पता नहीं क्या है लेकिन ठीक है Hold on, what is this? मैं गेम रिस्टार्ट करके देख रहा हूँ अगर ये सही से चल जाए फिर तो मजे ही मजे हैं Just hold on. Relaunching the game. जल्दी लॉन्च हो जा भिड़ू मुझे देखना है रे ट्रेसिंग में कितना बढ़िया दिखेगा वो ये विदाउट रे ट्रेसिंग ये सब फिल्टर वगैरह अप्लाई करके बहुत सॉलिड दिख रहा है लिटरली सॉलिड मजा आ गया FPS तो कुत्ते जैसे हिट करेंगे लग तो ऐसे ही रहा मुझे FPS लॉक करके चलना पड़ेगा ऐसा लग रहा मुझे ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो RTS में नहीं तो FPS इतना खाएगा तो मजा नहीं आएगा फिर हर बार कंपाइलिंग शेडर करना जरूरी है
देखते हैं FPS को क्या कंडीशन है मैक्स RTX पे डालने के बाद। हाँ ये FPS सीधा डाउन टू 30 लगाता हूँ मुझे। What is अब मैं फिल्टर ऑफ करूँ? नहीं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट Huh? Oh, there. तो ये लो क्या था कैमरा शेक तो नहीं चाहिए ना कैमरा नहीं चाहिए गेम ये बताओ ना तुम इसको तुम 60 पे लॉक मारो 45 30 60 पे लॉक मारो तुम एंड RTX ओके मीडियम पे रखो तुम बताओ तो एटलीस्ट 40 FPS तो हो रहा है रे ट्रेसिंग वेरी हाई आई थिंक मुझे मॉड्स आई मीन मॉड्स क्या बोल रहा हूँ सॉरी माय बैड ये फिल्टर्स निकालने पड़ेंगे उसके लिए मुझे फिल्टर निकालो ना विद फिल्टर ही ज़्यादा बेटर लग रहा है RTX की जरूरत है नहीं मेरा फिल्टर से काफ़ी है रे ट्रेसिंग लो पे भी ऑफ ही रखो एटलीस्ट लो पे परफॉर्मेंस देखो लेट मी सी ना FPS तो कुत्ते जैसे कार रहा है आई थिंक लो पे ज़्यादा सूट कर रहा है इसके साथ किसके साथ ये जो लगा के रखे मैंने गेम बिल्डर्स ज़्यादा बेटर लग रहा है ट्राई करके देखता हूँ it's definitely better now. As expected, the Silvers chose to face us in the semi-finals. The news spreads quickly. Why did it work? You knew this was coming? Of course. To them, it's a provocation. And to forfeit would be a disgrace. Domina Julia must be here. She wouldn't miss a moment like this. She's shrewd and exceptionally capable, but arrogant to the core. She's convinced that she's always right. She doesn't believe in talking things through, thinks it's for the weak.
So we'll show her we don't need rigged matches to win. We'll win with pure strength. Have passed, and I stand before you once more, not as a gladiator, but as a witness to the start of this grand event. You all know well that gladiatorial combat is the lifeblood of our ancient and mighty city. Seize power and fight for victory. Once, we fought to survive on the seas. That same instinct courses through our veins today. The instinct to face fate head on and defy it. Testing survival without holding the bro. Remember, those who cling to glory without the strength to defend it will see it slip through their fingers. Warriors, by the eternal sun, may your courage honor Septimont and prove your loyalty to its spirit. I look forward to the rise of new heroes in this Aegon. Let the Aegon begin. Come, my fellow warrior. Victory is ours for the taking. अच्छा अब करना हो गेम विंडो रे ट्रेसिंग का ही लफड़ा लग रहा था मुझे चैलेंज फाइट में चलते हैं अभी भी अटक रहा है क्या मेरा वॉइस हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 अभी भी अटक रहा है क्या Hold on, let me check. अभी चेक करके बताऊंगा कहाँ स्टक हो रहा अब ठीक है आई थिंक वो इसका ग्लिच हुआ होगा मेरा मुझे पता इसका वॉल्यूम अब ठीक है सही है ना चलो आओ बेटी फाइट शुरू करो Are you ready for the gladiators, Aegon? बिल्कुल Happy hunting, gladiators.
वॉइस एक्टर इटालियन टाइप का लग रहा है मुझे। इसका अगस्त होगा, मजा आ गया। मैंने मेरे टीम का नाम वुथरिंग वेव्स रखा। Pero rover भाई यार। उसको हिलने ही ना दे रहे भाई। उसको मरने मत देना, मुझे एक और बार स्पैम करनी है। There we go. जहर। ये लूपा के बीच में आइल्ट चल रही है, वो जो एकदम से आया ना वो लूपा का आइल्ट था। और इस frequency. It's like the dark tide in the inverted tower. What's this? Thanks, my fellow warrior. Can't win, so you play dirty in the arena, huh? You make me sick! और बताओ भाई, अभी तो बस वोवा गेंशिन का कॉपी कर रहा है और गेंशिन वोवा को कॉपी कर रहा है। कॉपी तो बोल नहीं सकते क्योंकि देखो, अगर तुमने पुराने गेम्स देखे हैं जैसे कि लेजेंड्स ऑफ ज़ेल्डा वगैरह है सब, तो गेंशिन एक वहाँ की कॉपी है। तो ऐसे अगर हम कॉपी ढूंढने जाएंगे ना तो सब एक दूसरे की कॉपी है। तुमने देखा गेम पे कभी खेला तुमने लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा वगैरह पुराने गेम्स? लिटरली अगर तुमने खेला होगा तो तुम्हें एक जैसा ही फील आएगा जब तुम गेंशिन पे स्विच करोगे उसके बाद। उसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ था एक्चुअली गेंशिन इम्पैक्ट खेलने के लिए। जब मैं ये सब गेम्स खेला था, कौन से लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा वगैरह ये सब मैंने गेम खेले, उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा ना ऐसा फ्रेंडली टाइप का गेम लगा। अरे ये तो मैं पहले ही खेल चुका हूँ इस टाइम, तब मेरे को पसंद आया था उस टाइम पर गेंशिन इम्पैक्ट। काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी और ग्राफिक्स थोड़े से इम्प्रूवमेंट थे उसमें डेफिनेटली, मज़ा आ रहा था। लेकिन वुथरिंग वेव्स खेलने के बाद ओ ब्रो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर तुम ज़ेनलेस ज़ोन 0 को भी कंपेयर करोगे गेंशिन इम्पैक्ट से तो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा तुम्हें, इंक्लूडिंग कैरेक्टर कस्टमाइजेशन क्या बोला, कैरेक्टर तुम्हारे डिज़ाइंस, कैरेक्टर शोकेस से लेके गेम प्ले तक कंपेयर टू गेंशिन इम्पैक्ट। कंपनी एक ही है बट डेवलपर्स अलग अलग हैं। वो क्या ट्रीटमेंट बेसिकली ऐसी है ना कि तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो रहता है उसको तुम हवा में उड़ाते हो कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो तुझे घंटा नहीं है, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना है, यहाँ है। और जब तुम्हारा सबसे छोटा बच्चा होता है तुम्हारे फैमिली का जो कि अभी ज़ेनलेस ज़ोन 0 है, तुम उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब ये डेवलपर साइड का बता रहा हूँ तुम्हें। डेव एक्चुअली लव्स टू ब्रिंग न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव अ लॉट इन ज़ेनलेस ज़ोन 0 देन कंपेयर टू गेंशिन इम्पैक्ट। गेंशिन इम्पैक्ट के डेव भी लाइक अरे यार 5 साल हो गए अभी तक साले मान ना रहा, ये लो तुम ला दिया लोड आउट के नाम पे। मीनवाइल वहाँ पे ज़ेनलेस ज़ोन 0 है, दोनों की कंपनी ही थी, बस दोनों के डेवलपर अलग अलग हैं। ज़ेनलेस ज़ोन 0 पे अभी मस्त मजा आ रहा है खेलते हुए। अभी वोवा खेलना व्हाट इट है डेफिनेटली वर्थ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोला तुम्हें, वोवा तो अभी पीक पे चल रहा है ब्रो, लिटरली पीक पे चल रहा है वुथरिंग वेव्स। अगर तुम अब नहीं खेलोगे तो तुम कब खेलोगे वुथरिंग वेव्स? बहुत मजा आ रहा है, कैरेक्टर सॉलिड है, और स्पेशली अभी जो नया रेजोनेटर आया है कार्टेथिया, लिटरली सॉलिड है। तुम एक काम करो, कार्टेथिया के एनिमेशन देखो, कार्टेथिया के ट्रेलर देखो, अभी देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ अब भी देख लो एंड आके बताओ मुझे कि तुम्हें
क्या लग रहा है उसके बारे में, कार्टेथिया के बारे में। Today's arena. This spear spiraled out of control. और ये कार्टेथिया का जो कैरेक्टर है ना, वो लिटरली 2 या 3 महीने से लोग हाइप है इस कैरेक्टर के लिए, कंपेयर टू स्कर्क, जो हम लोग 2 से 2.5 साल हो गए स्कर्क का वेट कर रहे हैं। फॉन्टेन जब शुरू हुआ था, शुरू नहीं, फॉन्टेन के इसमें जब निविलेट वाला वो सीन था, निविलेट के सामने वो आई थी, तब से हम वेट कर रहे हैं स्कर्क का। मैं खुद भी वेट कर रहा था स्कर्क का। मैं अभी रिसेंटली डिसअपॉइंट हुआ स्कर्क पे क्रायो, जब उन्होंने अनाउंस किया कि भाई स्कर्क पे क्रायो रहेगी, तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। And your proof? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्कर्क विथ समथिंग लाइक न्यू एलिमेंट, अबिस एलिमेंट वगैरह कुछ ऐसे सा। Honorable Airfor, I guarantee this spear will withstand any scrutiny. कार्टेथिया पुल करना चाहिए क्या? डेफिनेटली वर्थ इट है, वो अभी सबसे ब्रोकन यूनिट है ब्रो। Looper, you और are हर the एक रेजोनेटर का fortune अलग to उसका our ये है, patronage. मैकेनिक वगैरह चल रहा है। You turned your back on us when we सी तो needed मैं you अगर the मैं most. देखो ये दूसरा साल अभी चालू चल रहा है, 1 साल पूरा हो गया है वुथरिंग वेव्स को, अभी दूसरे साल में स्टेप इन करते हुए 1 साल हो गया। फिर भी जो 1.0 में सबसे पहला रेजोनेटर इन्होंने लॉन्च किया था जियान, वो अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी सॉलिड डीपीएस दे रहा है। बताओ, टॉप टियर में है वो अभी भी। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू अभी नए लॉन्च हुए मैंने, लेकिन डिफरेंस जो है ना 10-15% का पावर डिफरेंस है, पावर गैप मैक्सिमम, वो भी इतने सॉलिड चल रहा है। और एओई में तो किंग है भाई जियान, स्टिल बेस्ट, मजा आ गया। मुझे मतलब अभी भी मुझे अगर पुल करना होता, मैं अगर कार्टेथिया का प्लान नहीं किया होता ना, तो मैं जियान डेफिनेटली निकाल देता। बहुत सॉलिड है, सारे यूनिट्स A1 है, मजा आता है खेलने में। जियान का जो प्ले स्टाइल है वो हैवी डैमेज बोनस होता है। उसके बाद अभी जो करंटली दूसरी रेजोनेटर है, एरो रेजोनेटर कार्टेथिया, वो एरो इसके कोरेजन पे है। अब दोनों के प्ले स्टाइल बहुत अलग है, तो सोच सकते हर एक रेजोनेटर का प्ले स्टाइल अलग है। कोई हैवी डैमेज पे बेस्ड है, कोई अल्ट बेस्ड पे है, कोई स्किल बेस्ड पे है, कोई नॉर्मल अटैक्स बेस्ड पे है, कोई फोर्टेस सर्किट बेस पे है, कोई क्विक स्वैप वाली टीम है, कोई मेन फील्ड वगैरह ज़्यादा टाइम देती है, लाइक जिनशी हो गई जिसे ऑफ फील्ड सपोर्ट चाहिए। दोनों जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक गेम प्ले अलग हो गया। मतलब सिमिलरिटीज तुम्हें बहुत कम मिलेगी, तो तुम चाहिए तो सारे रेजोनेटर पुल कर सकते हो, सब मजा आता है खेलने में। Allow me to remind everyone how silver does मुझे खुद not नहीं लगा था cower, कि nor fear मतलब defeat. मैं शुरुआत में मुझे इतना खास Path पसंद नहीं Aegon आया will था have वुथरिंग constantly वेव्स। led in victories. स्पीकिंग पॉइंट Even है, if मैं we lose जो भी है today, सच बता we रहा हूँ will not be expelled from Septima. जब मैंने पहली बार मतलब genshinimpact में से जब मैंने वुथरिंग वेव पे स्विच किया था, तो मुझे मैंने 1.2 से शुरुआत की थी, और मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था वुथरिंग वेव्स उस टाइम पे। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, रेजोनेटर मैंने ट्राई किए, खेला भाई, उसके बाद जो मैं कंटिन्यूसली रखा हुआ, अभी तक मैंने बीच में एक भी बार छोड़ा नहीं वुथरिंग वेव्स। बहुत मजा आया मुझे। So tell me, Looper, who is 1.0 पे मेरे को desperate बहुत to स्लगिश destroy लगा था, लेकिन वुथरिंग a वेव्स बहुत ज़्यादा lone स्लगिश। gladiator cut off from her family, or a house as powerful as mine? ब्रॉन्ज से मैसेज आ रहा है मुझे, I don't know। अभी करंटली सेम स्पॉट पे, टॉप डीपीएस पे सारे नहीं, लेकिन तुम्हें अगर बताऊं तो होल्ड ऑन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉप डीपीएस कौन चल रहा है। Enough of this disgrace. अभी टॉप टियर में चल रहा है Performance jester. ये कौन है अपनी, कैरलेटा, जसानी, कार्टेथिया, कैमिलिया, जिनसी, फीबी, ये सारे टॉप डीपीएस में चल रहा है। लिटरली ये सारे टॉप टियर में है। इनके बाद में टियर में आते हैं ये जो सब डीपीएस टाइप के कैरेक्टर ना, वो आते हैं, लाइक शिकोना हो गई, एनकोर फ्री कैरेक्टर है, एनकोर स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर, वो आ रहा है टॉप टियर में। मतलब टॉप टियर के बाद बताओ, सेम लाइन में आ रहा है जियान, ब्रांड,
चांगली चांगली एक्चुअली वो ये बहुत हार्ड है। ये देखिए ये कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है। जियान तो फिर अभी भी सॉलिड है भाई जियान। मेरे पास अभी एस्ट्रेट होते हैं ना बहुत सारे, तो मैं डेफिनेटली जियान पुल करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है जियान। उसका प्ले स्टाइल और पावर भी मतलब लिटरली बढ़िया है। स्पेशली एओई में तो वो किंग है अभी तो। एओई मोड जो नया गेम प्ले एंड गेम बना है ना, वो लिटरली जियान के लिए बना है। मैं तो बोलता हूँ That's Yuno, the priestess of Septimont. She rarely Priestess? leaves the temple and only shows up accompanying F4 Augusta. देखो अभी मैं कंफ्यूजन मुझे इतना हो रहा है ना कि ये कैरेक्टर जो अभी वुथरिंग वेव्स ने नए पैच के कैरेक्टर दिखाए हैं, वो मुझे सारे पसंद आए और मेरे पास इतने एस्ट्रॉइड्स दिए हैं। देखो कितना बढ़िया कैरेक्टर है। एंड आई थिंक ये हीलर हो सकती है, हीलर या फिर शील्डर। रोशिया छोड़ के मतलब रोशिया छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर मुझे पसंद है। वो है भी टॉप टियर में सारे मेटा कैरेक्टर से सब। आई थिंक वुथरिंग वेव को तुम देखोगे ना तो मतलब लो टियर में सिर्फ 2 या 3 ही है। वो भी स्टैंडर्ड बैनर, उसमें कल्चर है जिसमें एक्चुअली तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको कॉम्बोज वॉम्बोज सीखने में, और बदले में रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है कल्चर होगा। और दूसरा है लिंगियन तो लिटरली थर्ड क्लास है, बिल्कुल भी पसंद है। वो टट्टी है। ये दो डीपीएस है 5 स्टार जो बॉटम में आ रहे हैं, वो दोनों फ्री तो मतलब ये स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर है। बाकी के स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर वगैरह सब मस्त टॉप पे बैठे हैं। No, I said it. Augusta, banish the Silvers from Septimont. Sorry? The priestess can foretell fate and has the power to make final calls here. Most people. चांगली तो trust मेरी है, judgment. बताओ। चांगली की स्किन भी अभी निकली है, बताओ तुम्हें। चांगली है मेरे पास, चांगली की स्किन है अभी, मस्त स्किन निकली है, चाहिए तो ले सकते हो तुम। But वो भी Yuno is डिस्काउंट के a bit साथ। extreme in our line of priestesses. Not everyone agrees with her behavior, despite her capabilities. ब्रो अगस्त का मॉडल बहुत प्यारा है, मजे आ गए। ये क्राउन कितना मस्त लग रहा है वो उस पर। बताओ पकड़ी गई सिल्वर हेड, फंस गई। Guilty. The temple has. जेएन वर्थ इट है, डेफिनेटली वर्थ इट है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा तुम जेएन पुल करो बाद में, लेकिन करंटली कार्टिथिया तो पुल कर ही लो। और फ्यूचर पैचेस में जब शिकोना का रीरन होगा तो शिकोना भी बाय कर लो, बाय क्या बोल रहा हूँ, पुल कर लो। Julia Silva, you know the weight of your actions. क्या मस्त मॉडल दिख रहा हुआ उसका। वो आई डोंट नो ये उसके सर पे लगाया क्या है, आई डोंट नो, लेकिन मजा आ रहा है, वो सूट हो रहा है उसमें। भागने की कोशिश कर रही थी। अच्छा नहीं, इन्हों को पकड़ा गया है, जो फ्रॉड किया था उनको पकड़ा गया है। अब इसके फट I गई। know your family once stood as the Look cornerstone at that. of this city. Its pioneers, its founders, its protectors. अभी कौन कौन आ रहा है? अभी कार्टेथिया है करंटली बैनर पर, और 18-19 दिन के बाद लूपा आएगी। For लूपा मतलब centuries, ये the Silvers ये कैरेक्टर fought आएगी। bravely कार्टेथिया का बैनर in जब the बैंड होगा तब hunting grounds, दोनों सॉलिड है। defending मुझे Septimont लूपा from बहुत प्यारी Cassidy's लगी कैरेक्टर, foes. उसका प्ले स्टाइल भी बहुत बढ़िया लगा मुझे लूपा का। बस एक ही प्रॉब्लम है, मेरे पास इतना एस्ट्रेस नहीं है कि मैं लूपा पुल कर पाऊँ। और अगर मैंने लूपा पुल कर ली तो अपकमिंग कैरेक्टर जो चीशा वगैरह जो आने वाली है ब्रो, चीशा नहीं, आई थिंक क्या नाम था उसका, नाम भूल गया। क्या नाम था उसका अभी जो रिसेंटली, होल्ड ऑन चीसा ही है, बताओ। But उसके लिए मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। you dishonor their legacy.
Do not disgrace them further, Julia. Leave Septimont. उसका बेली बटन दिख रहा है, बताओ। Return. क्लोथिंग देखो उसका तुम। Command, F4. ये आ गया धरने से। Your performance just now. That wasn't a complete मस्कुल disaster. तो कोई भी कैरेक्टर नहीं है, At तुम least जो you चाहे show पुल कर more सकते हो। promise than those idiots retreating to cling to their तुम mean जियान पुल points. करोगे तो भी तुम पूरा ऑल गेम पूरा गेम क्लियर कर दोगे विदाउट एनी इश्यूज। इतना स्ट्रांग है वो आदमी। मस्कुल तो एक भी कैरेक्टर नहीं है। हाँ, मस्कुल सब डीपीएस है। Do not disappoint me or What kind of Augusta in mustful bug- tomorrow's final. क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। तो मस्कुल है नहीं फिलहाल गेम में कुछ। तुम लिटरली स्टैंडर्ड बैनर से लेके भी It बस seems स्किल there's है still तुम्हारे some पास तो कर time सकते हो before the तुम। other semi-final concludes. मतलब I am here to serve your will. Make this quick. Time for another ये स्टैंडर्ड adventure? बैनर कैरेक्टर है एनकोर। तुम इसको बिल्ड करोगे उससे भी तुम्हारा आराम से चल जाएगा। बस दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास 3 टीम चाहिए। तो तुम्हारे पास 3 डीपीएस, 3 सब डीपीएस, 3 सपोर्ट चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि टावर्स ऑफ एडवर्सिटी जो है कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ये जो एंड गेम मोड है इसमें तुम्हें टोटल 3 टीम लगता है। 1 या 2 टीम से तुम्हारा काम नहीं चलता है। इस एंड गेम में तुम्हें 3 टीम बिल्ड करनी रहती है, 3 अलग अलग। तो बेसिकली इन द एंड तुम्हारे पास Understood. 3 टीम चाहिए बनाने के लिए। तो फिर तुम ऐसे बना सकते हो। लाइक ये मेरी कमिलिया की टीम है, मुझे बहुत पसंद है कमिलिया की टीम। बेसिकली मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद है। ये मेरी जहानी की टीम है, ये मेरी कार्लेटा की टीम है, ये मेरी शांगलियाओ की टीम है। अभी तो मैं ये 3 चला रहा हूँ टीम, कमिलिया, जानी और ये कार्लेटा। ये मैं उससे पहले चलाता था, शांगलियाओ, किनलिन वगैरह। और अभी ये वाले चलाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली शिकोना पुल किया और अभी कार्टिया आज सुबह ही मैंने कार्टिया पुल करी है। तो इसको भी बिल्डअप करना है मुझे, इसलिए वो लेवल 1 है। और सबसे बढ़िया बात तो भाई तुम फ्लाई कर सकते हो। भाई चांगली का टीम बोलो, डबल डीपीएस को हम यूज कर लो उसमें। कोई भी बेस्ट टीम उसकी रहेगी तुम्हारी ये ब्रांड के साथ। Let me cut to the chase. The Silvers बिल्कुल are ब्रांड के साथ तो finished. बहुत प्यारी उसका कॉम्बिनेशन बन जाता Therefore, है। Augusta's swift मजा आएगा decision तुम्हें। sealed their fate. But don't tell me you had no part in this. अगर तुम्हारे पास ब्रांड है तो Who's to ब्रांड के say? साथ मजे कर How सकते could हो, I लिटरली predict मजे कर Domina सकते हो। Julia would tamper with my नहीं है skill? तो फिर तुम जज के साथ खेल सकते हो। Regardless, अगर तुम्हारे पास House वो भी 5 Silver स्टार has नहीं है been तो तुम banished. चीशिया Even वगैरह if they deceived you first, कर सकते हो। you still आउटरो left स्किल their उसकी team without a फ्यूजन word डैमेज and प्लस लिबरेशन violated डैमेज your बोनस है। contract. You can't deny that. और इसको बात करने दो। तो बेसिकली सीन ये है कि तुम चीशिया वगैरह खेल सकते हो अगर तुम्हारे पास ब्रांड या फिर जेजर नहीं है तो क्योंकि उसका आउटरो स्किल वगैरह है 20% फ्यूजन डैमेज आई थिंक, और 25% कुछ तो भी लिबरेशन डैमेज बूस्ट करते हो। वो बढ़िया है। और अगर तुम्हें डबल डीपीएस कॉम्प में खेलना है तुम एनकोर के साथ खेल सकते हो। एनकोर तो स्टैंडर्ड बैनर कैरेक्टर है, चीशिया 4 स्टार यूनिट है जो फ्री में मिलता है तुम्हें गेम स्टार्टिंग में। जजर ले सकते हो तुम, लेकिन उसका मतलब बेस्ट इन स्लॉट यूनिट है उसका ब्रांड के साथ तो मौज है मौज। उससे फिर तुम सपोर्ट कोई भी ले लो, वही ना शोर कीपर। मैं पर्सनली बोलूँगा तो मुझे शोर कीपर ज़्यादा बेटर लगती है। क्रित बॉब वगैरह चाहिए उसके साथ। चांगली डीपीएस ही है ब्रो। व्हाट डू यू मीन चांगली डीपीएस है क्या? सॉलिड डीपीएस है ब्रो। Skip to the end, Cartor. सिर्फ डीपीएस नहीं, सॉलिड डीपीएस है तो। Or spread gossip. उसके साथ एक सब डीपीएस पेयर करो ना क्विक स्वाप टीम में, बहुत मजा आएगा तुम्हें। इवन कल्चर जो फ्री टू मीन स्टैंडअप बैनर करेक्टर उसको भी तुम उसके साथ पेयर कर सकते हो। थोड़ा सा स्वेटी टीम हो जाएगा वो, मतलब तुम्हें बहुत ट्राई हार्ड करना पड़ेगा उसके साथ। चांगली
और उसके साथ ये कालगारो, ये आराम से तुम उसके साथ ये कर, आराम से तो नहीं क्योंकि ट्राई हार्ड उसमें बहुत होगा क्विक स्वाइप में। Fine then. I handled the silver sponsorship. बट अगर of तुम the ब्रांड Battle वगैरह हो तो Legions, ब्रांड के लिए and ब्रांड का वेपन लगता है I क्योंकि can वो पूरा ensure एनर्जी damage to रिचार्ज your वगैरह पे career बेस्ड is है। minimal. In return, लेकिन I'll be your event उसमें manager for the next year. ट्रिपल डीपीएस कॉम्प यूज कर सकते हो तुम। फनी पार्ट ये है कि अगर तुम्हारे पास ब्रांड है चांगली के साथ, तुम लिटरली ट्रिपल डीपीएस जा सकते हो। चांगली ब्रांड, तीसरा डीपीएस कोई भी उठा लो, मौज है। मतलब क्विक स्वैप डीपीएस टाइप कोई भी डाल लो, उसमें मजा आ जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ब्रांड है वो हीलिंग कर देता है, टीम वाइड हीलिंग है, टीम वाइड शील्डिंग है, तो वो सपोर्ट भी करता है, उसका डैमेज भी सॉलिड है, स्पेशली अगर तुम्हारे पास उसका सिग्नेचर वेपन है। और गेस व्हाट, सिग्नेचर वेपन तो इस गेम में सारे गारंटीड है। तो आज नहीं तो कल तुम उसका सिग्नेचर वेपन निकाल ही लोगे अगर तुम्हारे पास ब्रांड है वगैरह। तो मतलब कोई से भी कैरेक्टर हो निकाल ही सकते हो तुम, क्योंकि वो कंप्लीटली गारंटीड है, उसमें कोई बकवास नहीं है, कोई 50-50 नहीं है, कुछ नहीं, गारंटीड वेपन से सारा। बहुत मजा आता है। Deal. But we'll need new terms. I trust you'll draw up a contract that satisfies me, Kato? Always ready to squeeze an opportunity, aren't you, Lupa? The Silvers lit the spark, but you turned a blind eye to what was happening. Don't fool yourself, Kato. You're complicit in this too. कुछ लोग बोल रहे चांगली सब डीपीएस है, क्विक स्वैप डीपीएस है, वो सब डीपीएस नहीं। मतलब काइंड ऑफ तुम उसको सब डीपीएस बोल सकते हैं, लेकिन वो क्विक स्वैप डीपीएस पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसमें। लाइक उसका प्ले स्टाइल अगर तुम देखोगे ना चांगली का, तुम उसको फटाफट उसके एबिलिटीज़ यूज़ करके दूसरे रेजोनेटर पे स्विच कर सकते हो, फिर उसके एबिलिटीज़ यूज़ करो, फिर वापस से स्वैप मारो तुम्हारे सपोर्ट या फिर थर्ड डीपीएस पे, उसकी एबिलिटी यूज़ करो, वापस तुम्हारे इस पे चांगली पे जाओ, एबिलिटीज़ यूज़ करो, और बस साइकिल चालू रहना चाहिए। समझ रहे हो तुम? गारंटीड है का क्या मतलब? गारंटीड है का मतलब है कि वुथरिंग वेव्स में वेपन बैनर में कोई 50-50 नहीं होता। तुम 1 पीटी से लेके 80 पीटी मैक्स, इसके बीच में तुम्हें कभी भी गारंटीड वेपन मिलेगा। पुल करते रहो, वेपन गारंटीड है, कोई 50-50 नहीं है, कोई अच्छा नहीं है वेपन में। एस्ट्राइड डालो, वेपन लेके जाओ। Fine. I'll do it your way. सब डीपीएस लोग उसके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली स्वैप करने पड़ते हैं कैरेक्टर। सब डीपीएस से अच्छा मैं उसको बोलूँगा क्विक स्वैप कैरेक्टर, वो ज़्यादा सूट करता है चांगली के लिए। उसको किसी भी ऐसे यूनिट के साथ कर सकते हो जो उस साइकिल में फिट बैठता है। For Augusta, the fiercest hunter in the grounds, our queen. If there's a storm brewing in Septimont, I intend to find the right place to take shelter. Finally some peace. What a day. रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें। That's right. इस वजह से निकल लो ना, तो बस मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर मैं क्या बोल रहा हूँ वेपन बैनर के बारे में। That fleeting frequency, it was similar to the Thenodians. Could it really be linked to the dark tide Lupa will bring forth in Septimont, as Fleurdelys said? Lupa. By the way, combat style बहुत मतलब सीखने में थोड़ा टाइम लगता है विद रिक्वेस्ट कॉम्बैट स्टाइल में, लेकिन उसमें बेनिफिट है, मजा आता है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, है ना, कि तुम एक्चुअली ये सारी चीजें कर सकते हो अगर तुम एक स्पेसिफिक 4 स्टार लेके उसको मास्टर कर लो, सारा कंटेंट क्लियर कर सकते हो। बट तुम्हें डंजन मेन क्लब में शामिल होना पड़ेगा। Well, if anything, she despises the acolytes in Raguna. Her obsession with titles is for the glory that comes with them. कहाँ भाग गए भाई? She prides herself on being the perfect Septimontian. It's highly unlikely she'd believe in the Sentinel.
I see. Sorry. Lend me your shoulder for a moment. I'm a bit tired. Go ahead. बताओ गैदरिंग वाइब्स चल रही है लास्ट Oh, wow. That's settled. Looks like the other two teams have wrapped up their match. The semi-finals are over. Finally, we can leave and get some rest. फाइनल्स में मुझे अभी लूपा वर्सेस ये दिला दो यार मजा आ जाएंगे कार्टिथिया वर्सेस लूपा Contender Lupa! Oh, congratulations on reaching the final! Oh, and you! Your performance earlier was truly impressive. Lupa, did you notice any signs of match fixing involving House Silver before? About that? I told you not long ago, the Bow of Legions has been exploiting their gladiators. But no one dared to speak up. If you win the final, oh, you will have the whole of Solace raising their drinks to your name. All right, everyone. I'll chat with you later. But first, let's give my fellow warrior a moment to breathe, okay? He's new to Septimont. I'm sure none of you want to get carried away and leave a bad impression on an outlander, Go. Find somewhere quiet to rest. I'll meet up with you once I've dealt with all this. बताओ चीज बहुत बड़ी देर लगी इसकी तुम लिटरली फ्लाई कर सकते हो It was the Thenodian and Dark Tide frequencies I sensed in her weapon, if only for a brief moment. She thought it was just the Silva's dirty trick, and didn't notice its connection with the Thenodian. Fleurdelys said her associate can weave fate and stories. If that's true, it means his forte can influence how things play out. But it's unlikely he can freely bend the fabric of reality. Fraxidus would have overrun Solaris long ago if he could. Either Septimont exists outside reality, or his ability has limits. If this isn't the real world, I could take more drastic actions. But if it is, killing Lupa would be an act I could never take back. The best approach is to stick to my original plan. Wait for Orsinosa to appear in the final. That's my lead to Cartethyia. I also sense Cartethia's frequency on Lupa too. If she's here, she's making moves, just like I am. हो सकता है In the meantime, I need to figure out that Overseer's limits. The longer this lasts, the more anomalies are bound to show. Boss, why the long face, huh? Something getting you down? बताओ बोलिंग आ गई Uling, why are you here? I'm here for sightseeing. How could I miss the Great Aegon? It's Septimont's signature event. ना प्यारा कैरेक्टर है अरे अब ये क्या था You are the one to break the deadlock. You've noticed it, haven't you, boss? Septimont is caught in some anomaly. बताओ How much do you know about it?
This is our second time meeting, Wuthering. That can't be a coincidence. I can feel it, but I don't know where it's coming from. Every time I get close, it slips away like smoke. But now, I'm sure of it. If I want out of this mess, I need to borrow some of your muscle. HoYo, but Taoists have their rules, can't say too much. But helping you helps me. A little nudge is no big deal, right? बताओ बच्ची मार खाएगी है A little something from me to you. A good start for us. Anyway, it's on me. No charge. Seeing isn't believing, but truth exists in the mirror of the world. Go ahead, see for yourself. कुछ तो गड़बड़ी की होगी इसने पक्का What do you think? The final's nearly here. Your contender Mia claim the title. She's done well so far, but her track record has been shaky. She'd better not slip up now. Most There's a fortune in the underground pits. If she loses, that John fellow promised she'd win no matter what. बताओ बेटिंग का पार्ट है ये भी John. Mia's manager. Listen, she's got all sorts of talk round her, and the odds are crazy. But past champions have always been the noble bloods, haven't they? Not to mention, she's originally from Raguna. अब इसके दिमाग इसका ठनका अभी Wuthering. She's gone again. I remember Lupa mentioning a gladiator named Mia. She disappeared years ago during a great Aegon. Verlova said the story only lasts for 3 days and ends during the final. The great Aegon is at the heart of the story after all. कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है This mirror is jingling. The closer I move in that direction, the louder it gets. I'd better check it out. करो करो पर चेक करो बताओ चेयर पे चिल मार रही थी इसलिए मुझे उस पर क्लिक नहीं करना Must we go through this? I know you can't bear to lose your golden goose, but Mia's completely lost it. That woman's crossed the line. Easy, easy. Haven't I already compensated you? Just bear with her a little longer. She's not losing it every time she steps into the arena, is she? She's just been under a lot of pressure. She's not the only one under pressure. They're planning to bring Kerosaurs into the final. Do you realize how much money is at stake? Tell me, how can I trust a fighter like her to win the final? I know Mia's unraveling, the hallucinations, the hysteria. It's been a lot. Did you know she cries in the lounge? Can you believe it? A gladiator in the lounge crying. She can't even connect with the audience, including her fans. What use is being a great fighter if you can't hold the crowd? We have no choice. The people of Septimont want to see her fight. If we take her out, the complaints will bury us. The star from Raguna, the champion of Septimont. That headline alone prints money. चलो गया Efficiency above all.
अब कहाँ चलना? तो ये तो यही पे है। That बताओ। gladiator girl, Mia, was it? I hear she's got quite the following. Oh, absolutely. Everyone loves her. As long as she's winning. Before the great Aegon, I remember her performance was abysmal. Hysteria, they said, utterly unhinged. For someone with her fighting skills, it's shocking how far she fell. Her value plummeted to rock bottom. I thought she'd be done after that, but then that John dragged her out of the mud. Oh, yes, it's tragic, really. Poor Mia. John will wring every last credit out of her. How pitiful. My dear Lucius, you've surely heard about the underground pits by now, yes? बताओ। Oh? What are you thinking? The commoners who bear grudges against the Senate, the vultures circling for profit. Rage simmers within them, a keg waiting to ignite. They're eager for chaos, bloodshed, and sacrifice. If we simply provide the spark, we'll make a fortune while eliminating untoward risks. Delightful. Nothing like a bit of spectacle and strife to pass the time, is there? अब क्या हुआ? So there she is. तो ये वो Mia. Relax, Mia. You can do this. Hold on. It's all right. I'll be fine. It hasn't been all bad. I've met people who've supported me. They've cheered me on since I first stepped into the arena. But I know my limits. No matter how much I push myself, this is as far as I'll go. कुछ तो गलत हुआ इसके साथ। I love this. Gladiating. Just stepping into the arena makes me feel happy. तो अब क्या हुआ फिर? But here, I can't treat it like a hobby. And I want to be seen. To hear them cheer for me. Their laughter, their cheers. Oh, I want to win. I want to win so bad. Okay, did you see? I need the money. Oh, divinity above. I hope I won't let anyone down. Oh, I need to be better. Much better. यहाँ से changes हुआ Mia में। I think उसने यहाँ से कुछ drastic measure लिए, भाग गई यहाँ से वगैरह ऐसा कुछ। Warrior! For an instant, I felt it. The Threnodian's frequency again. Whew.
finished talking with them. Let's go back. Oh, almost forgot. This is for you. The heart pour I wanted you to try before. Chilled is the best way to have it. कुछ मिला के लाया होगा इसने. You need to rest before continuing this investigation. Your strength is spent. Thank you for your help these past few days. We're both from Renacita. I'm here by the Sentinel's will. This is simply my duty, for I was once blessed by the Sentinel. The blessings and freedoms they grant, I wish to share them with everyone across these islands. The tidal blight is spreading faster. I'm afraid. It's okay. Do not let it break you. One thing is certain. This anomaly stems from a specific power. Some facilities and records have been rewound nearly 2 decades back. We just need to find out why and who's responsible. The clock is ticking, but we still have a chance. The mastermind behind this will be tricky to deal with. Don't worry, I'll handle it. Compared to the darkness that once whispered in my ears, a tangible enemy is easier to face. Besides, the Righteous One will notice this anomaly when he arrives. Our moves so far will guide him forward. तो इसे याद क्यों नहीं है फिर तो कार्टेथिया ऐसा मिल गया या फिर कुछ सीन हुआ है जिसकी वजह से she forgot about Cartethyia and all this thing. You really trust him, don't you? Yes, very much. We correct each other's mistakes and walk the path of salvation together. Trust in yourself too. One day, you will reclaim your name. That's strange. As for those vile intentions lurking in the dark tide, we'll cut them off together. No, she's talking like वो बड़ी हो गई Cartethyia. Now, shall we continue the But investigation? Lupa is a banger too. Are you ready? Definitely worth it. Absolutely. बताओ. This is so exhausting. Dealing with these headaches takes more energy than fighting in the arena. Just for now, in the end. What is it? You're radiating worry. ये सूंघना जरूरी है क्या? If it's about tomorrow's final, maybe you should relax a bit. Lupa, can you tell me more about Mia? Sure, but why the sudden interest? I'm just curious. I overheard some people talking about her earlier. Well, contender Mia. I first heard about her from Domina Julia. Julia didn't like her. Probably because they once competed in the same Aegon. Mia disappeared after claiming the title, leaving that Aegon without an official champion. बताओ. An ignorant fool! That's how Julia described her. Back then, I'd just been purchased by the Silvers, and I got curious about the story.
Turns What do you out mean by you got Mia purchased? spent almost all her time out of the arena training. Beyond the barest of needs, she devoted herself to honing her craft. That kind of dedication wasn't well regarded in Septimont back then. Rumor has it she got caught in dirty match fixing, cracked under the pressure and ran. Everyone has their breaking point. If she ran because of it, I don't blame her. Well, maybe I just handle these things better. Or maybe I just don't care about people's expectations. I'm not above the commercial events. It's how I made a name for myself, built my worth. As long as I'm in the arena, I'm happy. बढ़िया. Applause comes and goes, but the things that matter, facilities, resources, opportunities, they don't come cheap. Septimont has its shadows, but some things still have to get done. I don't mind being used as long as whoever I work with knows where the line is. I know it's easy to turn a blind eye to the dirty games, but that's just handing Septimont over to the vultures. इस पूरे स्टोरी के पीछे कुछ तो है. The Silvers played dirty in the arena I hold dear. बीच में फॉरलोवर का बॉम्ब ड्रॉप करना. So, इन्फॉर्मेशन ड्रॉप आ गई. ये इसके साथ कुछ गलत हो रहा है करके. अब देखना है वो क्या रहा है. वो बीच में जो स्कार का एंट्री था वो कहाँ गया? वो कब हुआ? Look at it. How beautiful. मैं कितनी बार ड्रिंक देगी उसे? To the great city of Septimont. Okay. Chalo. Today's the final. Let's go. May victory be ours, and may you find the one you've been searching for. Dude, this fits so good. आराम से ट्रैवल कर लो ऐसे. Free as a bird. कितना मजा आ रहा है ब्रो. बहुत easy हो गया अब यार traveling करना all over the place, especially now that we have flight access and we can literally fly now. That's so good. I mean, we can fly on like last patch, but it still feels fantastic. Okay, there we are. Oh, you said what now? So that's the guardian echo of Septimont. But there's something different about this Arsinosa compared to the one I saw confronting Cartethyia. Oh, hold on. I forgot to tell you something yesterday about Mia. Decades And what was ago, that? During the Great Aegon, Mia disappeared on her way to receive the award. Before that, she did claim the title of the Bloody Aegon and even received Arsinosa's blessing. What do you mean by Bloody Aegon? The current 2-on-2 matchup was only introduced thanks to Augusta and her predecessor. The Royal Rumble type था क्या The बना? matches were far more brutal. Gladiators were thrown into a chaotic free-for-all. To hype up the Blood right event, down with the organizers would unleash hordes of tacit discords into the arena. The last gladiator standing was crowned the victor.
least, changes have been made since then. Refined by flames and tempests, all that endures eventually becomes part of Septimont's legacy. The day of the final is here. Okay, let's do this. Let's do this. And her Come on. significance is known to every Septimontian. It is etched in chronicles and sung in legends. If you seek the glory of Arsinosa's blessing, then fight with everything you have. Show me if any of you four possess the strength to earn the Guardian's recognition. Camera angle always amazes me. I mean, they know what they are cooking, right? Listen, my fellow warrior. Those cheers are for us. They wait for us to give them a fight to remember. Are you ready to win this with me? Absolutely. Let's go. Wonderful. Now, it's hunting time. Is this my where we fellow warrior. see Lupa versus Cartethyia? Let's see. Strange. Gliding sensation. Damage the bot data. Perfect teamwork. We make quite the hunting party. तो उस पे लॉक इन मत करना, इस पे लॉक इन कर. There we go. What's actually going on there? I have no idea what was going on. What's this? What's going on now? Cartethia's frequency is getting stronger. Hopefully this helps. I am the Tempest! I never doubted that you'd end up here. The wicked will face judgment! Just as humans came to me, filling that dark tower with light. So we can heal up with our burst, right? I mean, liberation. One more time. The wicked. इसको निपटाना पहले तो. He has already given us salvation. And now, though we stand apart, we still fight together. This helps. There we go. Okay, well. There she is. Pin. Wait, what's going on?
Okay, here we go. The guardian that once protected the glory of Septimon, I will get what? now reduced to this. Tragic. Sounding the death knell. Furious tides. Split the heavens. Holy, look at that. Oceans, bow before me. Exulting Marius. The haunting whispers. Such is their blessing. The formidable power once wielded to guard Septimont is now tainted by the dark tide. Get him. Face your destruction. Charge forth with me. Atonement. Finality. I will grant you release and uncover the mastermind behind this chaos. Diri behan ko naman Rup. Sounding the death knell. Charge forth with me. My blade. Purge all evil. Diyan na to. Repent. For silence beckons. That's Marius. The haunting whispers return. Salvation. March on. Charge forth with me. Sounding the death knell. Exonerate. Windstorm. Sweep all the way. I have no words. True form. Revealed at last. Charge forth with me. Tide, rise and crash. Ruin is imminent. Torrents, rage on. Vexing Marius. Salvation. Furious tides. Split the heavens. Oceans. That was fantastic. The echo is seriously strong. Like, more jaggy. So ये था वो scene. Zed. More jaggy में. Righteous one. Zuhair. I'll be waiting for you at the end of the story.
फॉरलोवर का यहाँ पे क्या प्लॉट था वो पता ही नहीं चला हमें। What's wrong? You seem like you're somewhere else. Lupa, how did we win? What do you mean by how do we win? Sale. We defeated our opponents? I see. The bloody Aegon I experienced definitely wasn't a dream. It was like the real world overlapped with the anomalous one. I kept seeing Lupa and Mia overlap with each other as well. Brilliant performance, warriors! बताओ ये कोई वक्त पकाते आ गया। Remember, this is more than just a title. It is a testament to your own strength and wisdom in overcoming your opponents. You've earned the right to claim it. आधा पार्ट उसका यहाँ पे जाएगा और आधा पार्ट इसके पास जाएगा। सही है, गुड। This medal once belonged to a single champion, the last survivor standing in the ring. But I divided it into two, to remind you that just as we fight alongside echoes, the glory of Septimont is upheld by heroes who support one another, to remain steadfast. बात तो सही है। Fighting alone is commendable. However, true strength lies in protecting those beside you. The high tide draws near. I want all warriors heading to the hunting grounds to remember this. ये तो भी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। That's interesting. Augusta, look. Another two have earned Arsenosa's blessing. You've done incredibly well. बताओ। As a gladiator, it's a great honor to claim the title with you. Let's savor this moment of glory and joy. अब इफेक्ट में आएगा उसका प्लान। I think this is what she was talking about. No? Dude. You plotted this tragedy. No, madam, I wouldn't take all the credit. The architects of this tragedy were the Septimontians themselves. A collective murder so entertainingly woven.
with blood on every hand. Who's left to point a finger? But I must admit, I'm astonished you would endure all this for strangers and lands you've never set foot on. I don't need any grand reason to slay a villain like you. The Threnodian once sought to pull the entire Renacita into the Dark Tide, but it failed. And so will you. Madam, surely you know you alone cannot undo my story. Alone. He will come here and find a way to finish this. बताओ इसको And भरोसा I तो will है. make your so-called perfect play spiral out of control. Silent, hollow words. The dark tide engulfing the city of glory. हट गया इसकी. All shall be swept away by the winds at the story's end. तो ये अभी होगा या फिर नेक्स्ट पैच में होगा? Unlocks in 20 days? Okay. और कुछ अनलॉक हुआ अभी? थोड़ी यही 60% एक्सप्लोरेशन करना था. तो we can get 300 asteroids now. तो टाइम कितना है? 40 days. So it's we have a lot of days in hands. 3 दिन में. अच्छा ये तो डेली वाला है. I mean वीकली वाला. ये ट्राई करना है. इसमें मिलेंगे हमें 100 एस्ट्रॉइड्स. मेन क्वेस्ट हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है. अभी अगले पैच में वेट करना पड़ेगा हमें. No. What should we do? से टोटल हमारे पास हो गए 977 एस्ट्रॉइड्स. स्टिल नीड अ वेपन. HP % बेस है उसका. Max HP increased by 12%. Okay. 15 seconds after casting intro skill or basic attack, ignore 8% of target defense when dealing damage. If target has at least one stack of arrow erosion, the damage taken by the target amplified by 20%. बढ़िया है ना?
क्योंकि आई थिंक ये पूरी तरीके से एचपी परसेंट पे, आई मीन एचपी पे स्केलिंग करती है, तो वेपन वर्थ इट है। I don't think this is worth it to purchase for me. I mean, ये डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। I mean, I can go for if I get something like कितने को आता है ये 360। पाँच निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, उसमें एक पुल हो जाएगा मेरा यहाँ पर 10 का। एंड मेरा पीटी अभी चल रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 10, 25, 22 का। 1600 अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 6 यहाँ से निकलेंगे एंड यहाँ से 4 निकालते हैं, राइट। 32 कॉस्ट होगा थोड़ा। So now we still have 376. So we can purchase this from the shop if we get our weapon from here. Let's see if we can get lucky and get the weapon right here. Oh fuck. Sadly नहीं मिला हमें वेपन। 387। आई मीन अगर मैं ये पूरा निकाल लूँ तो मेरे को मिल ही जाएगा वेपन, दस नो डाउट अबाउट दैट। इतना तो अनलकी नहीं हूँ मैं, 48 पुल्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन वही है ना कि मैं वेपन करूँ या फिर कार्टिथिया का वेब बैंड यूज करूँ। आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ, क्या बेटर रहेगा। I think we should wait. We still have like a lot of days. Results आ जाने दो पूरे, कैलकुलेशन वगैरह सब आ जाने दो, फिर डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास शॉप में ये पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है। आफ्टर ग्रो कोरल जो पड़ा हुआ है वो हमें वेपन पे यूज करना चाहिए या फिर वेव बैंड पे, उसके सीक्वेंसेस पे यूज करना चाहिए, वो देखेंगे। उस पर काफी टाइम है। सो अभी आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। शाम को या फिर कल सुबह मिलता है। शाम को मे बी आरपी स्ट्रीम करूँ मैं, अगर मैं रोल प्ले स्ट्रीम करा तो शाम को आरपी स्ट्रीम करूँगा मैं, मजा आएगा। बिकॉज अभी तो खाना भी खाना है मुझे, है ना। सो सी यू गाइस अराउंड, शाम को मिलता है। ठीक है, सी यू, बाय बाय। मस्त आराम करो, मौज करो, खाना खाओ, मिलते हैं शाम को।